मोहम्मद शमी अपनी गेंदबाजी की तैयारी में। 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 4 ऑन साइड पे। इसी फील्डिंग की सजावट के साथ मोहम्मद शमी दाहिने हाथ के तेज तरीन गेंदबाज। मोहम्मद शमी के लिए फील्डिंग की सजावट, थर्ड मैन, गली, पॉइंट, कवर और मिड ऑफ। ये है ऑफ साइड की फील्ड। ऑन साइड में स्क्वायर लेग लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए मोहम्मद शमी की पहली गेंद, बहुत अच्छी गेंद। मिडिल स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद पूरी तरीके से मचलते हुए और तमाम फील्डरों ने शमी का साथ दिया। एम्पायर वसीमुद्दीन अपनी जगह अनमूव खड़े रहे। मोहम्मद शमी की पहली गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, इन स्विंगर गेंद। मिडिल स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद गालिबन लेग स्टंप मिस करती हुई थी, जिसकी वजह से एम्पायर वसीमुद्दीन ने कोई कान न धरे। हालांकि पूरी तरीके से मचल गए थे मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। आदिल खान है ये बल्लेबाज जो सामना करेंगे मोहम्मद शमी का। अगली गेंद फिर से अच्छी गेंद और इस बार ये आउट। पूरी तरीके से चौंकाया मोहम्मद शमी ने। आदिल खान जो कि पूरी फॉर्म में थे इस टूर्नामेंट में, शमी ने शुरुआत में ही पहले उन्हें आमिर हमीद थे ये कैचर, जिन्होंने आसान सा कैच लेके मोहम्मद शमी के लिए ये बड़ी विकेट दिलाई है। मोहम्मद शमी जो कि अपना सानी नहीं रखते तेज गेंदबाजी में, शुरुआत में पहली गेंद पे चौंकाया था पूरे तरीके से। वहाँ एम्पायर वसीमुद्दीन अनमूव रहे थे, लेकिन दूसरी गेंद पे ऑन ड्राइव करना चाहते थे। ओवर पिच आउट स्विंगर गेंद थी, पूरी तरीके से गेंद की पिच पर नहीं पहुंच पाए, सीधा खेल बैठे मिड ऑन की तारीफ, जहां फील्डर ने कोई गलती नहीं की। और ये शुरुआत में ही पहला झटका और पहला सदमा कहेंगे हम यहाँ टोटल एनर्जी के बल्लेबाजों को जो लगा है। और आदिल खान के रूप में, आदिल खान जो कि बहुत ही फॉर्म में थे, आदिल खान जिस तरह की धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे थे पिछले मैचों में, आज अपने बल्लेबाजों को मायूसी के हालत में छोड़ते हुए पवेलियन में आ रहे हैं। नए जाने वाले बल्लेबाज सईद बिन नासिर। सईद बिन नासिर भी पाकिस्तानी घरेलू क्रिकेट का एक जाना माना नाम। डोमेस्टिक क्रिकेट में 192 मैचेस खेल चुके हैं और 10,000 से ज़्यादा रन हैं सईद बिन नासिर के। तो कहना पड़ेगा दोनों ही इस वक्त हमारे सामने। मोहम्मद शमी जो कि दुनिया क्रिकेट का एक जाना माना नाम है, मोहम्मद शमी, और सईद बिन नासिर जो कि घरेलू क्रिकेट का बड़ा नाम है, सामना करेंगे मोहम्मद शमी का। सईद बिन नासिर शमी अपनी फील्डिंग की सजावट सजाते हुए अब एक स्लिप के साथ गेंद करेंगे। एक स्लिप, थर्ड मैन, गली, पॉइंट, कवर और मिड ऑफ। ये है ऑफ साइड की फील्ड। ऑन साइड पे स्क्वायर लेग लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए शमी हमसे दूर जाते हुए, और इस बार लाइन से भटके थे शमी। लेग स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाती हुई इस गेंद को सईद बिन नासिर ने आखिरी लम्हे तक गेंद को देखा, जाने दिया विकेट कीपर के लिए, जहां विकेट कीपर ने उसे गैदर किया। यहां एम्पायर वसीमुद्दीन का इशारा वाइड बॉल का, और एक और रन यहां वाइड के रूप में टोटल एनर्जी की झोली में। मोहम्मद शमी पूरे रिदम के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, और जब शमी रिदम के साथ गेंदबाजी करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत और स्मूथ रन अप होता है उनका। इस बार बहुत अच्छी गेंद, आउट स्विंगर गेंद। गेंद में पूरी तरीके से उछाल भी था, जो पिच में कूदा है, जो पिच में उछाल है, उसका पूरी तरीके से फायदा उठाया मोहम्मद शमी ने। ऑफ साइड ऑफ स्टंप इस गेंद को छूना चाहते थे सईद बिन नासिर, किस्मत वाले रहे कि गेंद ने उनके बल्ले का कोई भी किनारा नहीं लिया, वरना विकेट कीपर और स्लिप इस बात के लिए तैयार थे। मोहम्मद शमी फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, पूरी तरह से रिदम से गेंदे कर रहे हैं मोहम्मद शमी। ये फाइनल मैच है, सेमीफाइनल भी मोहम्मद शमी मैन ऑफ द मैच हुए थे, उससे पहले भी मैन ऑफ द मैच हुए थे क्वार्टर फाइनल की दौड़ में भी।
और इस बीच अच्छी गेंद उतने ही अच्छे अंदाज में मिड ऑफ पे खेलते ही रन के लिए दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज। जो ही समी को अपनी गेंद पर फील्ड करते देखा, तेजी के साथ ये रन चुराया है दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी दौड़ विकेटों के दरमियान दोनों बल्लेबाजों की, अच्छे तालमेल की दौड़। टोटल एनर्जी 2 रन 1 विकेट खोकर शुरुआत में विकेट चटकाई है मोहम्मद समी ने। आदिल खान की बड़ी विकेट थी ये जो समी ने चटकाई। इस बार बहुत अच्छी गेंद फिर से। इस बार गेंद धीमी थी पहले की निस्बत, गेंद के पेस से पूरी तरीके से चूके यहाँ चालाकी से समी ने गेंदबाजी की थी। अपने पेस को कम किया, रफ्तार को धीमा किया। उस धीमी रफ्तार से पूरी तरीके से बल्लेबाज छेड़ना चाहते थे गेंद को। ऑफ स्टंप की पड़ी गेंद को, गेंद गई विकेट कीपर के पास और एक और डॉट बॉल वहां मोहम्मद समी की जानिब से। मोहम्मद समी फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। एक स्लिप के साथ 6 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 3 ऑन साइड पे। इसी फील्डिंग की सजावट के साथ मोहम्मद समी हमसे दूर जाते हुए रन अवे फ्रॉम अस। इस बार कुछ इंटरप्शन हुई है और समी ने वो स्लिप हटाई है और ऑन साइड पे ले आए हैं स्लिप के फील्डर को ऑन साइड पे स्क्वायर लेग की जानिब, और थर्ड मैन को थोड़ा फाइन कर दिया गया है। समी फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर और इस बार फिर से अच्छी गेंद, फुल पिच गेंद थी, आउट स्विंगर गेंद थी, पूरी तरीके से चूके। इस बार फिर से किस्मत वाले रहे कि गेंद ने उनके बल्ले का कोई भी किनारा नहीं लिया, वरना करीब करीब थे समी इस विकेट को चटकाने के। वेल बोल्ड समी, अपना पहला ओवर खासा किफायती ओवर किया है समी ने। 1 ओवर में 2 रन दिए हैं और एक खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई है। पवेलियन भेजने वाले खिलाड़ी जो थे वो आदिल खान थे, जो अच्छी फॉर्म में थे। एक बड़ा झटका था, बड़ा सदमा था ये बल्लेबाजों के लिए। और सईद बिन नासिर आए हैं। अरशद अजीम अभी तक अपना खाता नहीं खोला, जो कि इनिंग की शुरुआत करने गए थे, सलामी रूप में गए थे बल्लेबाजी की शुरुआत में। और यहाँ 35वां कराची जिमखाना उमर एसोसिएट रमज़ान क्रिकेट फेस्टिवल 2022 का ये फाइनल खेला जा रहा है यहाँ IMI उमर और टोटल एनर्जी के बीच। IMI उमर टॉस जीतकर पहले फील्डिंग कर रहे हैं और 1 विकेट चटका चुके हैं। वहाँ गेंदबाजी में क्लब रोड की ओर से गेंदबाजी की जिम्मेदारियां संभालेंगे आफ्ताब। आफ्ताब के लिए फील्डिंग की सजावट। तीन खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 3 खिलाड़ी ऑन साइड पे, 6 ऑफ साइड पे। इस बार थोड़ी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, लेग स्टंप पे पड़ी। इस गेंद को लेते ही घूम गए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए सईद बिन नासिर थे ये बल्लेबाज, जिन्होंने जो ही लेग स्टंप पे पड़ी इस गेंद को देखा, अपने आप को एडजस्ट किया, गेंद को लेते ही घूमे और खेला उसे बैकवर्ड शॉर्ट लेग की तरफ। 4 रनों के लिए आफ्ताब फिर से तैयार। इस बार ऑफ स्टंप पे पड़ी इस गेंद को उछाल के साथ ही कट किया है। देखना पड़ेगा तब तक कि डीप पॉइंट से फील्डर आके फील्ड करें। मौका था बल्लेबाजों के लिए 1 रन का, और वहां तारीफ करनी पड़ेगी डीप पॉइंट के फील्डर पे गेंद पे तेजी से झपटे थे। उनको झपटता देखकर बल्लेबाजों ने दूसरे रन की हिम्मत ना दिखाई। सईद बिन नासिर पहुंचे 6 रन पर 4 गेंदों का सामना करते हुए। अरसलान अजीम ने अभी अरशद अजीम है ये बल्लेबाज, अरशद आजम है। शुक्रिया राशिद, यहाँ करेक्शन की है राशिद ने, क्योंकि अरशद आजम थे ये बल्लेबाज, जिन्होंने अभी अपना खाता नहीं खोला। अभी तक दिफाई रूप अपनाया हुआ है अरशद आजम ने, क्योंकि इन्होंने गिरते देखा है आदिल खान की बड़ी विकेट को। तो कोई
मुशक्कत नहीं उठाएंगे, गालिबन शुरुआत में देखभाल के अंदाज में खेलेंगे। अरशद अजीम तैयार। अरशद आजम सामना करेंगे। आफ्ताब का इस बार कट किया है खूबसूरती के साथ। जो ही गेंद को ऑफ स्टंप पे गिरते देखा, अगले कदम पे गए, धीरे से कट किया, पॉइंट की जानिब। फील्डर मौजूद, रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। ये पहला आफ्ताब हमीद फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। अपने ओवर की पांचवी गेंद करेंगे इस बार। अच्छी गेंद, पेस में थोड़ा धीमापन दिखाया, उसको पूरी तरीके से चूके बल्लेबाज। ड्राइव करना चाहते थे ऑफ स्टंप पे, गेंद गई विकेट कीपर के पास और किस्मत वाले रहे यहाँ अरशद आजम। करीब करीब था मामला। आफ्ताब फॉरेन की ओर से हमारी तरफ आते हुए, रंजिम टू अस। और इस बार ड्राइव किया है खूबसूरती के साथ। एक टप्पा खाने के बाद कवर के फील्डर को पूरी तरीके से चुकाया। गेंद गई बिल्कुल कारपेट के सहारे, डीप मिड ऑफ बाउंड, डीप मिड विकेट, डीप एक्स्ट्रा कवर की जानिब 4 रनों के लिए। और 4 रन से अपना खाता खोला है यहाँ अरशद आजम ने। इस गेंद को जो ही ऑफ स्टंप पे पड़ते देखा, थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी, पूरे तरीके से बल्ले के बीचों बीच लेते हुए दिखाया। डीप एक्स्ट्रा कवर का रास्ता 4 रनों के लिए। गेंद में उछाल था लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर था, फील्डर भी पूरी तरीके से चूके थे और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। दूसरे ओवर के अख्तिताम पर 11 रन। यहाँ कराची जिमखाना के ग्रीन कारपेट पर खेले जाने वाला यह फाइनल 2022 का टोटल एनर्जी और आईएमआई उमर के बीच खेला जा रहा है। आईएमआई उमर टॉस जीतकर पहले फील्डिंग कर रहे हैं। इन्हीं की गेंदबाजी की शुरुआत जो कि मोहम्मद समी और आफ्ताब हमीद ने अपने पहले ओवर में 9 रन दिए। समी जो कि किफ़ायती गेंदबाजी करते हुए एक ओवर में 2 रन देके एक विकेट भी हासिल किए। समी की अगली गेंद आउट स्विंगर गेंद, बैकफुट पर गए, गेंद अपने आप को गेंद की लाइन से अलग किया, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, खेल दिया उसे गली पॉइंट की जानिब। सईद बिन नासिर ने 1 रन के लिए। आज मौसम इंतहाई गर्म और सूरज का जो गुरूर है पूरी तरीके से दिख रहा है यहाँ, लेकिन खिलाड़ियों की बड़ी हिम्मत और बड़ी ताकत है कहना पड़ेगा, जिस तरीके से रोजे की हालत में ये रमजान टूर्नामेंट खेलते हैं। इस बीच समी की अगली गेंद, अच्छी गेंद, आउट स्विंगर गेंद, गेंद के स्विंग को पहचानते हुए गाइड किया है, बल्ले का मुंह खोला पॉइंट गली की तरफ। तब तक के डीप थर्ड बेंच से आके फील्डर फील्ड करते हैं। मौका था बल्लेबाजों के लिए 1 रन का, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। और 1 रन के साथ 13 रन, 1 विकेट खोकर टोटल एनर्जी टॉस हारकर पहले बारी लेते हुए यहाँ 20-20 के इस मैच में मोहम्मद समी दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज अपनी फील्डिंग की सजावट में फिर से तब्दीली करते हुए और फिर से अब स्लिप को हटा लिया गया है सईद बिन नासिर के लिए। और अब 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 4 ऑन साइड पे। मोहम्मद समी सईद बिन नासिर को दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार फिर से अच्छी गेंद थी लेकिन बहुत ही ध्यान के साथ, पूरी इज्जत के साथ खेले हैं सईद बिन नासिर। वापस समी की जानिब जहां रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। मोहम्मद शमी फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। कमेंट्री बॉक्स की ओर से दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज, पाकिस्तानी क्रिकेट का जाना माना नाम मोहम्मद शमी। और इस बार ये गेंद आउट स्विंगर गेंद थी, खेलना चाहते थे बल्ले के बाहरी हिस्से से होती हुई गेंद डीप गली पॉइंट की तरफ 4 रनों के लिए।
समी अच्छे पेस से गेंदें कर रहे हैं। उस पेस का इस बार सईद बिन नासिर ने पूरी तरीके से फायदा उठाया, गाइड किया उसे गली पॉइंट की जानिब। किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं था इस बार। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। मोहम्मद शमी फिर से तैयार, अपने बॉलिंग मार्क पर गेंद करेंगे सईद बिन नासिर को। और इस बार बहुत अच्छी गेंद, चूके थे सईद बिन नासिर और नज़दीकी मामला हो सकता था। आखिरी लम्हे में जल्दी करना पड़ी थी। ब्लॉक होल में की गई इस गेंद को सईद बिन नासिर दिफाई अंदाज में खेलना चाहते थे, कमान नहीं रख पाए बल्ले पर। एक डॉट बॉल्स मोहम्मद शमी की जानिब से। शमी अब तक 1.5 ओवर कर चुके हैं। 8 रन दिए हैं शमी ने अब तक। एक खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई है। अच्छी इकोनॉमी के साथ गेंदें कर रहे हैं। शुरुआत से किफ़ायती गेंदबाजी की है और जहराना गेंदबाजी की है मोहम्मद शमी ने, जिसके लिए वो मशहूर हैं। मोहम्मद शमी दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 4 ऑन साइड पे। इस बार गेंद आउट स्विंगर गेंद कट करना चाहते थे अपनी जगह खड़े खड़े, गेंद की लाइन से पूरी तरीके चूके। और कहना पड़ेगा इस किस्म की छेड़छाड़ कभी कभी नुकसान दे जाती है बल्लेबाजों को। आउटसाइड ऑफ स्टंप में खासी बाहर गेंद थी, गेंद गई विकेट कीपर के पास। और इसी के साथ शमी का दूसरा ओवर खत्म हुआ। शमी 2 ओवर 8 रन, एक खिलाड़ी आउट। 3 ओवर के इख्तिताम पर 17 रन। टोटल एनर्जी टॉस हारकर पहले बारी लेते हुए यहाँ, और मौजूदा रन औसत जो है 5.67। और शुरुआत से ही कहना पड़ेगा ताला सा लगाए हुए है गेंदबाजों ने, खास करके शमी जिस तरीके की किफ़ायती गेंदबाजी कर रहे हैं। एक विकेट भी चटका चुके हैं। दूसरे एंड से जिन्होंने आफ्ताब हमीद हैं गेंदबाज, उन्होंने अपने पहले ओवर में 9 रन दिए थे। अब तैयार हैं दूसरा ओवर करने के लिए फार एंड की ओर से। उनके लिए फील्डिंग की सजावट। 4 खिलाड़ी ऑन साइड पे, 5 ऑफ साइड पे। ऑन साइड पे लॉन्ग ऑन लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए, डीप मिड विकेट लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए, शॉर्ट लेग और मिड ऑन, ये है ऑन साइड की फील्ड। और इस बार ये गेंद मिडिल स्टंप से लिया है, उठाया है, खेला है उसे अगले कदम पे डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। फील्डर मौजूद, वहां रन भी मौजूद दोनों बल्लेबाजों के लिए। अरशद आजम थे ये बल्लेबाज जिन्होंने ये आमिर फिर से तैयार हमारी तरफ आते हुए। इस बार ये शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैकफुट गए, जगह बनाई, खेला उसे मिड ऑन की तानी पुल करते हुए सईद बिन नासिर ने। ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ, लेकिन इतनी भी शॉर्ट नहीं कि आसानी के साथ पुल कर सकें बैट्समैन, फिर भी खेलने में कामयाब हुए मिड ऑन की जानिब, जहां एक मिस फील्डिंग का नज़ारा मिड ऑन के फील्डर की जानिब से, जहां कोई रन नहीं होता वहां 1 रन दे बैठे बल्लेबाजों के लिए। हमीद फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार उठाया है, मिडिल स्टंप पे पड़ी इस गेंद को, देखना पड़ेगा। लॉन्ग ऑन के फील्डर हसरत भरी निगाहों से देखते ही रहे गेंद की उड़ान को। गेंद उड़ान भरती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से। एम्पायर रशीद खान के दोनों हाथ फजा में बुलंद हुए और 6 रन। बहुत ही हिम्मत वाला, बहुत ही ताकतवर शॉट जिसे कहना चाहिए अरशद आजम की जानिब से, जो खामोश शुरुआत में इनिंग खेल रहे थे, सलामी रूप में गए थे। अपने सामने एक बड़ी विकेट गिरते देखी थी जिसका सदमा था कहना पड़ेगा उनको, लेकिन अब उस सदमे से बाहर आए हैं अरशद। और दिखाया इस बार 6 रनों का रास्ता गेंदबाज आमिर हमीद को। और इन 6 रनों के साथ 25 रन टोटल एनर्जी। मौजूदा रन औसत अब 7.14 और अब प्रोजेक्टेड स्कोर जो है वो 143 रन है, 143 है। और इस बार फिर से ड्राइव किया है खूबसूरती के साथ, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। गेंद डीप कवर की तरफ, बिल्कुल कारपेट के सहारे 4 रनों के लिए इस वक्त बहुत ही भरपूर
अरशद का शॉट ये देखने को मिला हमें, जो ही गेंद को थोड़ा सा ओवर पिच गिरते देखा, अगले कदम पे आए, बल्ले के बीचों बीच लिया, दिखा दिया उसे कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीचों बीच कारपेट के सहारे होती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। खूबसूरत क्रिकेटिंग शॉट कहना पड़ेगा यहाँ अरशद की जानिब से। गेंद की पिच को देखा, गेंद की सिमत को देखा, गेंद के स्विंग को देखा, पूरी तरीके से गेंद की पिच पर आए और इस बार बहुत अच्छी गेंद, कमबैक किया इस बार गेंदबाज ने। अंदर की तरफ आती हुई उस गेंद को जल्दी करना पड़ी थी, पहले से कमिट हो गए थे अगले कदम पे, लेकिन आखिरी लम्हे में जो ही गेंदबाजी में तब्दीली देखी, तेजी के साथ अपने आप को एडजस्ट किया, खेला ऑन साइड पे, तब तक के ऑन साइड पे फील्डर आके फील्ड करते हैं। मौका था बल्लेबाजों के लिए 1 रन का, और उस 1 रन के साथ अरशद पहुंचे 17 रन पर 11 गेंदों का सामना करते हुए, 2 चौके और 1 छक्का लगाने के बाद 154 के स्ट्राइक रेट के साथ अरशद बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब सईद बिन नासिर सामना करेंगे। इस बार गेंद फिर से थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेन और फिर से वही चूके हैं ऑन साइड पे फील्डर, जहां कोई रन नहीं बनता, फिर से 1 रन दे बैठे। इस बार भी गेंद शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसको 1 रन के लिए खेला सईद बिन नासिर ने। सईद बिन नासिर पहुंचे 12 रन पर 10 गेंदों का सामना करते हुए 2 चौकों की मदद से। और अब ये जो दूसरी विकेट की साझेदारी है सईद बिन नासिर और अरशद के दरमियान, 30 रन की हो चुकी है 21 गेंदों पर, और ये बहुत ही अहमियत की हामिल है ये साझेदारी। ये लंबी साझेदारी सजाना पड़ेगी दोनों बल्लेबाजों को, अगर अपने बल्लेबाजों को इज्जत बख्श मकाम पर पहुंचाना है इस फाइनल में। मोहम्मद शमी शुरुआत से ही खासी तेज़ और खासी लाइन और लेंथ पे गेंदें कर रहे हैं। मोहम्मद शमी को हमने इस टूर्नामेंट में अच्छी तेज़ गेंदबाजी करते देखा है। शमी फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, 5 खिलाड़ी, 6 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 3 ऑन साइड पे। शमी अब ऑन साइड पे बैकवर्ड स्क्वायर लेग के फील्डर को थोड़ा सा वाइड करते हुए लॉन्ग लेग की जानिब, शमी हमसे दूर जाते हुए रन अवे फ्रॉम अस। शमी इस बार बहुत अच्छी गेंद, आउट स्विंगर गेंद, गेंद में उछाल भी था, उसके उछाल से पूरी तरीके से चूके, अपनी जगह खड़े खड़े कट करना चाह रहे थे और पूरी तरीके से चूके गेंद गई विकेट कीपर के पार। फिर से किस्मत वाले रहे सईद बिन नासिर, गेंद ने बल्ले का कोई भी किनारा नहीं लिया, वरना नज़दीकी मामला हो सकता था। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं शमी बगैर स्लिप के गेंदबाजी कर रहे हैं, जानबूझकर छोड़ा गया वो फासला कि गेंद बल्लेबाज छेड़छाड़ करे गेंद से तो एक मौके जैसी बात पैदा हो। ये चालाकी होती है गेंदबाज की। जिस तरीके से इस बार सईद बिन नासिर दिफाई स्ट्रोक खेला है, ओवर पिच गेंद पे कवर की जानिब, कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए रन लेने का। और एक और शमी की डॉट बॉल। मोहम्मद शमी, 6 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, थर्ड मैन, गली, पॉइंट, कवर और मिड ऑफ, ये है ऑफ साइड फील्ड। ऑन साइड पे डीप स्क्वायर लेग, लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग, और इस बीच पुल किया है। देखना पड़ेगा, वहाँ ख़राब फील्डिंग, रोक सकते थे, थोड़ी एफर्ट करते तो गेंद मिड ऑन की तरफ कारपेट के सहारे होती हुई 4 रनों के लिए। थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, यहाँ सईद बिन नासिर बैकफुट पर गए, खेला उसे बल्ले के बीचों बीच। हालांकि भरपूर कमान वाला शॉट नहीं था, थोड़ी सी टाइमिंग मिस थी, लेकिन फिर भी सईद बिन नासिर जैसे जाने माने बल्लेबाज, घरेलू क्रिकेट का बड़ा नाम है सईद बिन नासिर, कमान के साथ खेले जाते हैं गेंदों को। लेकिन सामने भी मोहम्मद शमी जैसे गेंदबाज हैं, उनको बहुत ही ध्यान से खेलना पड़ता है। सईद बिन नासिर सामना करेंगे मोहम्मद शमी का। 3 खिलाड़ी ऑन साइड पे, 6 ऑफ साइड पे। इस बार अच्छी गेंद, गुड लेंथ गेंद, बैकफुट वगैरह, कमर की ऊंचाई तक उछलती हुई गेंद को उछलते हुए टर्न किया है ऑन साइड पे, तब तक के स्क्वायर लेग फील्डर आके फील्ड करते। मौका था बल्लेबाजों के लिए
एक रन का जूही फील्डर को थोड़ा सा सुस्ताते देखा, दूसरा रन भी चुराया है दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी दौड़ विकेटों के दरमियान दोनों बल्लेबाजों की। और इन 2 रनों के साथ 37 रन 37, एक विकेट खोकर टोटल एनर्जी। टॉस हार कर पहले बारी लेते हुए यहाँ 20-20 के इस मैच में मोहम्मद शमी हमसे दूर जाते हुए सईद बिन नासिर को इस बार कम पेस के साथ शमी की इस गेंद को गाइड किया है मिड ऑफ की जानिब, जहां फील्डर मौजूद। रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। मोहम्मद शमी अब तक 2.4 ओवर कर चुके हैं, 14 रन देके एक खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई है मोहम्मद शमी ने। अच्छी इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं मोहम्मद शमी। 4.94 का इकोनॉमी है मोहम्मद शमी का। मोहम्मद शमी अपनी फील्डिंग की सजावट को थोड़ा सा, स्क्वायर लेग के फील्डर को थोड़ा सा डीप किया है वाइड एज पर। शमी स्मूथ रन अप द विकेट। इजी आर्म एक्शन है शमी का। इस बार शफल करते हुए टर्न किया है ऑन साइड पे, आगे गिरी इस गेंद को सईद बिन नासिर ने डीप स्क्वायर लेग की जानिब 1 रन के लिए। और उस 1 रन के साथ 5वें ओवर का खेल इख्तिताम को पहुंचा। 5वें ओवर के इख्तिताम पर 38 रन 38, एक खिलाड़ी आउट। अरशद खेल रहे हैं 17 रन पर 11 गेंदों का सामना करते हुए, जबकि सईद बिन नासिर खेल रहे हैं 20 रन पर 17 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौकों की मदद से। अरशद 11 गेंदें और 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 17 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। मोहम्मद शमी अपने कोटे का तीसरा ओवर मुकम्मिल किया है अभी। 3 ओवर 15 रन और एक खिलाड़ी मोहम्मद शमी ने आउट किया। इकनॉमी जो है वो 5.00 की है शमी की। वेल बोल्ड शमी। मौजूदा रन औसत 7.60 है। और इस तरीके से प्रोजेक्टेड स्कोर जो है वो 152 का है। और जिस तरीके से बल्लेबाज लेके जा रहे हैं अब तक बारी को, अगर 150 और 160 का रन भी सजाते हैं तो फिर भी कहना पड़ेगा अपर हैंड जो है वो IMI उमर के बल्लेबाजों के लिए रहेगा, क्योंकि मोहम्मद शमी ने जो कल एक शानदार इनिंग खेली थी, सिंगल हैंडेड ही अपने झोली में मैच को कर लिया था मोहम्मद शमी ने। तो खतरे की बात है, जब तक शमी बल्लेबाजी में भी रहेंगे बल्लेबाजों को आस रहेगी, उम्मीद रहेगी, चाहे वो 200 का टारगेट भी हो। और इस बार पुल किया है सईद बिन नासिर ने खूबसूरती के साथ, देखना पड़ेगा। और डीप लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ एम्पायर रशीदुद्दीन का इशारा। 6 रन। मिडिल स्टंप पे थोड़ा सा शॉट गिरते देगा गेंद को। पुल किया है सईद बिन नासिर ने, घूमते हुए दिखाया उसे 6 रनों का रास्ता। डीप लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। फील्डर सिर्फ देख ही सकते थे इस गेंद की उड़ान को। वहां आमिर हमीद फिर से तैयार अब अपने बॉलिंग मार्क पर। और इस बार ऑफ साइड ऑफ स्टंप गेंद थी, कट किया है बैक फुट जाते हुए शॉर्ट थर्ड मैन की जानिब। फील्डर मौजूद, गिरते पड़ते गेंद को रोका, लेकिन 1 रन लेने से ना रोक पाए बल्लेबाजों को। आमिर हमीद फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। अरे यार चेंज क्या हो रहा है? आफ्ताब है ये गेंदबाज जो कि इस बार 1 रन आसानी के साथ लिया है। अरशद पहुंचे 18 रन पर। सईद बिन नासिर खेल रहे हैं 27 रन पर। आफ्ताब हमीद तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर।
ऑनलाइन आफ्ताब की गेंद कट किया है खूबसूरती के साथ। सईद बिन नासिर ने वो बल्ले का अपना कमाल, वो अपने बल्ले का जोर दिखाया है। सईद बिन नासिर ने इस बार ऑफ स्टंप पे पड़ी इस गेंद को, बैक फुट पर गए, अपने आप को गेंद की लाइन से पीछे किया, कट किया उसे बल्ले के बीचों बीच लेते हुए डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ। फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, गेंद कारपेट के सहारे 4 रनों के लिए। खूबसूरत शॉट सईद बिन नासिर का। आफ्ताब हमीद फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर हमारी तरफ आते हुए। फॉरेन की ओर से इस बार ऑफ स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ जाती हुई गेंद को छेड़ना चाहते थे, गेंद उनकी पहुंच से दूर थी। विकेट कीपर ने गैदर किया, वहां अंपायर रशीद का इशारा वाइड बॉल का, और यहाँ एक और रन वाइड के रूप में। टोटल एनर्जी की झोली में टोटल एनर्जी 50 रन, एक विकेट खोकर, और मौजूदा रन औसत जो चल रहा है वो 8.82 है। और ये साझेदारी बड़ी अहमियत की हामिल है दूसरी विकेट की, जो कि अब तक 50 रन मुकम्मिल कर चुकी है 32 गेंदों का सामना करते हुए। इस बार अच्छी गेंद थी, उसको अच्छे अंदाज में ऑन ड्राइव करते हुए खेले सईद बिन नासिर डीप में डाउन की जानिब। तब तक के डीप से आके फील्डर फील्ड करते, मौका था बल्लेबाजों के लिए। 1 रन का 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। सईद बिन नासिर पहुंचे 32 रन पर, अच्छी बारी ले रहे हैं सईद बिन नासिर 32 रन की 21 गेंदों का सामना करते हुए। 4 चौके और 1 छक्का लगाकर 152 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं सईद बिन नासिर, जबकि अरशद भी 18 रन पर हैं 12 गेंदों का सामना करते हुए। 2 चौके और 1 छक्का लगाने के बाद सईद बिन नासिर के साथ अरशद का भी स्ट्राइक रेट 150 का है। आफ्ताब हमीद तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 4 ऑन साइड पे गेंद करेंगे। अरशद को इस बार आगे गिरी इस गेंद पे खेला है अगले कदम पे पॉइंट की जानिब, वहां थोड़ी सी चूके फील्डर उनके चूकने का पूरी तरीके से फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने, और ये रन मुकम्मिल किया। छठे ओवर के इख्तिताम पर और सर्किल का खेल खत्म हुआ। छठे ओवर के इख्तिताम पर 53 रन 53 और सर्किल का खेल खत्म हुआ है। सर्किल में 53 रन बनाए हैं। यहाँ मिला जुला कहना पड़ेगा, सर्किल खेला है एक तरीके से। फेवर में है सर्किल IMI टोटल एनर्जी के फेवर में है सर्किल का खेल। सिर्फ 1 विकेट खोई है उन्होंने और 53 रन सजे हुए हैं स्कोर बोर्ड पर। और इसका सेहरा कहना पड़ेगा ये जो साझेदारी है दोनों बल्लेबाजों के दरमियान। तिरपन रन की शुरुआत में जो विकेट चटकी थी आदिल खान की, समी ने पवेलियन की राह दिखाई थी आदिल खान को, जो आदिल खान बगैर अपना खाता खोले आउट होकर पवेलियन में गए थे। बहुत बड़ा झटका था वो टोटल एनर्जी के लिए, लेकिन जिस तरीके से उस सदमे को और उस झटके को बर्दाश्त किया है इन दोनों बल्लेबाजों ने, सईद बिन नासिर और अरशद ने कमान के साथ अब तक बल्लेबाजी कर रहे हैं और 53 रन जोड़ चुके हैं दूसरी विकेट की साझेदारी में। और यहाँ आमिर हमीद हैं गेंदबाजी की जिम्मेदारियां संभालने आए हैं कमेंट्री बॉक्स की ओर से। आमिर हमीद गेंद करेंगे अरशद को, और इस बार फुल लेंथ गेंद थी, ड्राइव करते हुए अगले कदम पर खेला है उसे मिड ऑफ की जानिब। तब तक फील्डर आके फील्ड करें, मौका था बल्लेबाजों के लिए। 1 रन का 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ 54 रन, 1 विकेट खोकर 7वें ओवर का खेल हो रहा है। आमिर हमीद दाहिने हाथ के ऑफ ब्रेक गेंदबाज गेंद करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज सईद बिन नासिर को। 5 खिलाड़ी ऑन साइड पे, 4 ऑफ साइड पे, और इस बार धीमी गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाती हुई इस गेंद को बैक फुट गए, गेंद की पिच को देखा, अपने आप को गेंद की लाइन से दूर किया, कट किया उसे कवर की जानिब। तब तक के डीप कवर से फील्डर आके फील्ड करते, मौका था बल्लेबाजों के लिए 1 रन का। और इस 1 रन के साथ सईद बिन नासिर पहुंचे 33 रन पर 22 गेंदों का सामना करते हुए।
4 चौके और 1 छक्के की मदद से सईद बिन नासिर अब अरशद सामना करेंगे आमिर हमीद की धीमी गेंदों का। और इस बार ये गेंद धीमी गेंद ऑस्टम की लाइन से में टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाती हुई इस गेंद को पूरी तरीके से गेंद को जज करते हुए गेंद की वही सिमत जहां गेंद स्पिन होके जा रही थी, गेंद पे झपटे पूरी तरीके से बल्ले के बीचों बीच लेते हुए डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर से वहां अंपायर वसीमुद्दीन का इशारा 6 रन। अरशद जो कि सलामी रूप में आए थे, शुरुआत में खासे मोहतात थे, एक सामने जो एक बड़ा खिलाड़ी को आउट होते देखा था, बड़ा सदमा था, वो उस सदमे को झेल गए हैं। अब अरशद भी 26 रन पर खेल रहे हैं, उनका साथ पूरा सईद बिन नासिर ने दिया है 61 रन की साझेदारी में। और इस बार गेंद फ्लैटेड गेंद थी, इस बार धीरे से ऑन ड्राइव किया है अगले कदम पर, तब तक के डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर आके फील्ड करते। मौका है बल्लेबाजों के लिए 1 रन का, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। अरशद पहुंचे 26 रन पर, सईद बिन नासिर सामना करेंगे अब आमिर हमीद का। इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, धीमी फ्लाइट के साथ उसका इंतज़ार किया, उसके धीमेपन का ख़त्म होने दिया, उसका धीमापन खेला उसे डीप कवर की जानिब बल्ले के बीचों बीच से सईद बिन नासिर ने 1 रन के लिए। और इस तरह की धीमी गेंदें खेलना बल्लेबाजों के लिए खासा मुश्किल होता है, डबल माइंड हो जाते हैं अक्सर बल्लेबाज। और इस बार पुल किया है, यहाँ थोड़ी सी कम फ्लाइट के साथ इस गेंद को देखना पड़ेगा तब तक के डीप मिड ऑन के फील्डर आके फील्ड करें। मौका है बल्लेबाजों के लिए 1 रन का। उस 1 रन के साथ 7वें ओवर का खेल इख्तिताम को पहुंचा। 7वें ओवर के इख्तिताम पर 64 रन 64, 1 विकेट खोकर टोटल एनर्जी टॉस हारकर यहाँ पहले बारी लेते हुए 20-20 के इस मैच में कराची जिमखाना के ग्रीन कारपेट पर खेला जाने वाला ये फाइनल मैच 35वां कराची जिमखाना उमर एसोसिएट रमज़ान क्रिकेट फेस्टिवल 2022 का ये फाइनल खेला जा रहा है दोनों टीमों के दरमियान। दोनों टीमें खासी मेहनत के साथ यहाँ फाइनल में पहुंची हैं और बहुत ही नज़दीकी मामलात के साथ पहुंची हैं, अच्छी फाइटिंग के साथ पहुंची हैं। ख़ास करके IMI उमर की तारीफ़ करना पड़ेगी, जिस तरीके से इन्होंने 2 दफ़ा या 200 से ऊपर का रन चेस किया है, क्वार्टर फाइनल में भी और सेमीफाइनल में भी। और उसका सेहरा पूरा मोहम्मद शमी की धुआंधार जारहाना बल्लेबाजी पर था। दोनों ही मैचों में बहुत ही जारहाना रूप धारा था मोहम्मद शमी ने और अपने बल्लेबाजों को इज्जत बख्श मकाम पर ले जाके खड़ा किया था, जो आज फाइनल के रूप में उन्हें मिला है। और वहाँ गेंदबाजी में तब्दीली नज़र आ रही है। हयात खान है, हयात खान दाहिने हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज। पहली गेंद बहुत अच्छी गेंद, लेग ब्रेक गेंद पूरी तरीके से चुकाया अपने स्पिन से। धीमी गेंद थी, धीमी लेग ब्रेक गेंद थी, कम फ्लाइट के साथ उसके स्पिन से पूरी तरीके से चूके एक लंबी हिट खेलना चाहते थे अरशद, क्रीज से बाहर आ गए थे। जो ही विकेट कीपर ने क्रीज से बाहर देखा, पलक झपकते ही बेल्स उड़ा दी और जब पीछे मुड़ के देखा अरशद ने तो एक खौफनाक मंजर था उनके लिए। आउट होकर पवेलियन में आ रहे हैं अरशद, अच्छी बारी लेके आ रहे हैं। इनिंग की आगाज करने गए थे, इनिंग की शुरुआत करने गए थे अरशद और अच्छी बारी ले रहे थे। अपने एक पार्टनर को जो उन्होंने गिरता देखा था शुरुआत में ही, उसका सदमा झेल रहा था और 28 रन की बारी ले रहे थे। 18 गेंदों का सामना करके 2 चौके और 2 छक्के लगाकर 155 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए पवेलियन पे की तरफ जा रहे हैं। और अपने बल्लेबाजों को बीच मझदार में भी अभी भी मझदार से निकले नहीं हैं बल्लेबाज, क्योंकि 64 रन पे ये दूसरी विकेट गिरी है, बड़ी विकेट है ये भी अरशद के रूप में जो ली है। यहाँ तारीफ करना पड़ेगी गेंदबाज की। नए जाने वाले बल्लेबाज फहद जब्बार हैं, तारीफ करना पड़ेगी यहाँ हयात खान की दाहिने हाथ की लेग ब्रेक गेंदबाजी पर। इस बार कम फ्लाइट के साथ लेग ब्रेक गेंद की थी अरशद, गेंद के स्पिन से और इस गेंद के फ्लाइट से पूरी तरीके से चूके थे। एक बड़ी हिट लगाना चाहते थे, गेंद की कहीं भी लाइन में नहीं थे, चूके गेंद गई विकेट कीपर के पास, जहां विकेट कीपर ने अपना फर्ज निभाया और बल्लेबाज गेंदबाज को मायूस नहीं किया।
हयात खान गेंद करेंगे, नए जाने वाले बल्लेबाज फहद जब्बार को इस बार फ्लाइट हिट गेंद, लेग ब्रेक गेंद ऑफ वॉली पे लेते हुए ड्राइव किया उसे विद द स्पिन, खेले हैं मिड ऑफ की जानिब और वहां यूं ही ओवर थ्रो को होते देखा, दूसरा रन भी पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। आते ही अपना खाता खोला फहद जब्बार ने 2 रनों के साथ। फहद जब्बार भी इस बार कट किया है फहद जब्बार ने लेग ब्रेक गेंद को ऑफ स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाती हुई उस गेंद को, गेंद के स्पिन को खत्म होने दिया, छेड़ा उसे पॉइंट की तरफ 1 रन के लिए। हयात खान दाहिने हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज ओवर द विकेट अप गेंद करेंगे शहीद बिन नासिर को। इस बार बहुत अच्छी गेंद, इस बार गुगली गेंद पूरी तरीके से चूके थे और पूरी तरीके से मचल गए हैं गेंदबाज और फील्डर। एम्पायर अरशद रशीद खान से कहना पड़ेगा अब तक मचल रहे हैं, यकीन नहीं कर रहे, लेकिन ये गेंद गुगली गेंद थी। लेग स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद एम्पायर के जज के मुताबिक गेंद लेग स्टंप मिस कर रही थी। एम्पायर रशीद खान अनमूव रहे, लेकिन मचलने का जो अंदाज था गेंदबाज का वो देखने के काबिल था, लेकिन इस मचलते हुए अंदाज की कोई परवाह नहीं की एम्पायर रशीद खान ने। और इस बार फिर से थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी। इस बार जो ही गेंद को थोड़ा शॉर्ट पिच गिरते देखा, बैकफुट पर गए सईद बिन नासिर, खूबसूरती से गेंद के लिए जगह बनाई, बल्ले के बीचों बीच खेले डीप मिड विकेट बाउंड्री की, डीप मिड ऑन बाउंड्री की तरफ, फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा शॉट सईद बिन नासिर का, एक शॉर्ट पिच थोड़ी, और इस बार फिर से सईद बिन नासिर ने बैकफुट पर जाते हुए इस बार खेला है डीप एक्स्ट्रा कवर की जानिब, स्पिन के साथ ही गेंद गई डीप कवर की जानिब। तब तक के 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और इसी के साथ 8वें ओवर का खेल इख्तिताम को पहुंचा। 8वें ओवर के इख्तिताम पर 72 रन और अच्छा पहला किफ़ायती ओवर किया है यहाँ और कामयाब ओवर किया है यहाँ हयात खान ने। अपने पहले ही ओवर में 1 विकेट भी चटकाई है और 8 रन देकर एक खिलाड़ी को पवेलियन भेजा है। जो पवेलियन भेजा है, जिन खिलाड़ी को वो अच्छी बारी ले रहे थे, अरशद आजम 28 रन की बारी खेल के गए हैं। 18 गेंदों का सामना किया, 2 चौके और 2 छक्के लगा के 155 के स्ट्राइक रेट के साथ अरशद, लेकिन एक बड़ी साझेदारी करके गए थे सईद बिन नासिर के साथ। 61 रन की साझेदारी की थी दूसरी विकेट की, जो कि खासा इज्जत बख्श मकाम दिया है अपने बल्लेबाजों के लिए। लेकिन अब आने वाले बल्लेबाजों को देखना पड़ेगा सईद बिन नासिर का कितना साथ देते हैं। सईद बिन नासिर जो कि पाकिस्तानी घरेलू क्रिकेट का एक जाना माना बड़ा नाम, जो कि 190 मैचेस से ऊपर खेल चुके हैं डोमेस्टिक में, 11,000 के करीब रन हैं। और इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, धीमी फ्लाइट गेंद आमिर हमीद की, उसको अगले कदम पे ड्राइव किया है। यूं ही डीप मिड ऑन पे फील्डर को डीप देखा, 1 रन पूरा किया, तब तक कि थ्रो करते फील्डर दूसरा रन भी पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों के साथ फहद जब्बार पहुंचे। सईद बिन नासिर ने खेला था, सईद बिन नासिर थे ये बल्लेबाज, पहुंचे 41 रन पर 27 गेंदों का सामना करते हुए। सईद बिन नासिर कुछ थकन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि रोजे की हालत में ऐसी बारी लेना आसान काम नहीं होता। 27 रन की बारी, 41 रन की बारी 27 गेंदों पर इस बार धीमी फ्लाइटेड गेंद को खेला है, देखना पड़ेगा। फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, गेंद टप्पा खाने के बाद लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। जहराना स्ट्रोक सईद बिन नासिर का, धीमी फ्लाइट को जो ही फ्लाइट होते देखा, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद की पिच तक आए, लिया उसे, बल्ले के बीचों बीच दिखा दिया उसे डीप मिड ऑन का रास्ता 4 रनों के लिए। और इन 4 रनों के साथ सईद बिन नासिर पहुंचे
45 रन पर 5 रन की दूरी पर अपनी शानदार निस सेंचुरी से बहुत ही आला बारी ले रहे हैं सईद। इस बार ऑफ स्टंप पे पड़ी इस गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन मिड ऑफ पर समी मौजूद, फील्ड किया, रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। आमिर हमीद दाहिने हाथ के धीमे ऑफ ब्रेक गेंदबाज, और इस बार पहले की निस्बत थोड़ी कम फ्लाइट के साथ, लेकिन पहचानते हुए सईद बिन नासिर ने ऑन ड्राइव किया है उसे। इस बार फिर से फील्डर को दूर से आते देखा, 2 रन चुराए दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी दौड़ विकेटों के दरमियान दोनों बल्लेबाजों की, फील्डर को भी थकाया, अपने आप भी थके, लेकिन 2 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। सईद बिन नासिर 47 रन पर पहुंचे, 30 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 156 रन का स्ट्राइक रेट है सईद बिन नासिर का। फहद जब्बार भी 150 के स्ट्राइक रेट, क्योंकि लेकिन उनका स्ट्राइक रेट काउंट नहीं करता, क्योंकि अभी उन्होंने 3 ही रन बनाए 2 गेंदों पर। इस बार अच्छी गेंद थी, उतनी ही अच्छे अंदाज में ऑफ ड्राइव करते हुए सईद बिन नासिर ने खेला है उसे पॉइंट की जानिब। तब तक के फील्डर आके फील्ड करते, मौका था बल्लेबाजों के लिए 1 रन का। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया, सईद पहुंचे 48 रन पर 31 गेंदों का सामना करते हुए, और सिर्फ 2 रन की दूरी पर अपनी शानदार निस सेंचुरी से सईद बिन नासिर। शुरुआत में झटका खाने के बाद सईद बिन नासिर ने संभाला है अपने बल्लेबाजों को, और इस बार फिर से फ्लाइटेड गेंद थी। इस बार उड़ता हुआ शॉट है, शॉट में वो कुव्वत नहीं थी। टप्पा खाने के बाद तब तक के डीप मिड ऑफ से फील्डर आके फील्ड करते, 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। सईद बिन नासिर जो कि खासे देर से बारी ले रहे हैं, थके हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 2 रन बनते, लेकिन सईद बिन नासिर दौड़ में थक गए थे, सिर्फ 1 ही रन पर अपने आप को रोके रखा, और उस 1 रन के साथ 82 रन 9वें ओवर के अख्तिताम पर 82, कंप्लीशन ऑफ 9 ओवर, लॉस ऑफ 2 विकेट, टोटल एनर्जी लूजिंग द टॉस एंड बैट फर्स्ट। सईद बिन नासिर जो कि 48 रन की बारी खेल रहे हैं, 31 गेंदों का सामना किया है। शुरुआत में ही बल्लेबाजों को झटका लगा था, तो इस तरीके से सईद बिन नासिर शुरुआत से ही इनिंग को लेके चल रहे हैं। 10वें ओवर का खेल हो रहा है। सईद बिन नासिर रोजे की हालत में, कहना पड़ेगा खासी जान जोखम का काम है, मुशक्क़त का काम है, जिस तरीके से बल्लेबाजी लंबी बारी लें। और सईद बिन नासिर ने 37 रन सिर्फ बाउंड्रीज पे लगाए हैं, लेकिन 11 रन दौड़ के लिए हैं। उस दौड़ में भी 11 रन में समझ लें जो रनिंग करना पड़ती है बल्लेबाज को, वो पूरी 2 दौड़ें लगाना पड़ती हैं विकेटों के दरमियान, जिससे थकावट होती है, और रोजे की हालत में थकावट तो बहुत ही हिम्मत का काम है। हयात खान दाहिने हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज, इस बार लेग ब्रेक गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाती हुई इस गेंद को चॉप किया है उसे डीप कवर की जानिब। कमान के साथ फहद जब्बार ने 1 रन के लिए फहद जब्बार पहुंचे। 5 रन पर सईद बिन नासिर सामना करेंगे, और इस बार सईद बिन नासिर क्रीज से बाहर आए थे, कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे। जूं ही चलाकी से गेंदबाजी की यहाँ हयात खान ने जूं ही सईद बिन नासिर को क्रीज से बाहर आते देखा, गेंद को खींचा, गेंद में तब्दीली की। सईद बिन नासिर ने भी इज्जत दी, उस गेंद को धीरे से खेला ऑफ साइड पे डॉट बॉल के रूप में। इस बार सईद बिन नासिर पुल करना चाहते थे, कमान के साथ नहीं कर पाए, फिर भी बल्ले की धीपरी हिस्से से उसी हुई गेंद बैकवर्ड शॉर्ट लेग की तरफ, डीप बैकवर्ड शॉर्ट लेग पे फील्डर आके फील्ड करते। मौका था बल्लेबाजों के लिए 2 रन का, 2 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी दौड़ सईद बिन नासिर ने, और 50 रन मुकम्मल किए हैं सईद बिन नासिर ने। वेल प्लेड सईद बिन नासिर, बहुत ही आला बारी ली है सईद बिन नासिर ने। 50 रन 33 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 151 रन के स्ट्राइक रेट में सईद बिन नासिर ने अपने बल्लेबाजों को एक अच्छे मकाम तक ले जा रहे हैं। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है, देखना पड़ेगा ऑफ साइड पे फील्डर पहुंच से दूर, 1 टप्पा खाने के बाद गेंद उनके हाथ में, लेकिन बल्लेबाजों के लिए भी मौका था 1 रन का। सईद बिन नासिर खासे थक गए हैं,
लेकिन अब ये जिम्मेदारी फहाद जब्बार को लेना पड़ेगी। सईद बिन नासिर को थोड़ा सा रेस्ट दें। और इस बार सईद बिन नासिर लंबी हिट करना चाहते थे। फहाद जब्बार चूंकि गेंद गई ऑन साइड पे, खेलना चाहते थे ऑफ साइड पे, लेकिन रन लेने में कामयाब हो गए। लकी रन कहेंगे हम इनको। फहाद जब्बार पहुंचे 6 रन पर। अब सईद बिन नासिर सामना करेंगे थकी हुई हालत में। और इस बार बैकफुट पर गए सईद बिन नासिर। गेंद के उछाल के साथ ही टर्न किया है उसे ऑन साइड पे डीप में डाउन की तरफ। तब तक फील्डर फील्ड करते हैं। मौका था बल्लेबाजों के लिए 1 रन का। और इसी के साथ 10वां ओवर इख्तिताम को पहुंचा। हयात खान का 10वां ओवर, हयात खान का दूसरा ओवर था ये। दूसरा ओवर भी अच्छा किफ़ायती ओवर था। हयात खान का अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 ओवर में 14 रन देके एक खिलाड़ी को आउट किया है हयात खान ने। अच्छी दाहिने हाथ की लेग ब्रेक गेंदे कर रहे हैं हयात खान। राइट आर्म लेग स्पिनर हैं। और वहां गेंदबाजी में तब्दीली कमेंट्री बॉक्स की ओर से अफसर नवाज आए हैं गेंदबाजी की जिम्मेदारियां संभालने। अफसर नवाज गेंद करेंगे सईद बिन नासिर को। वैसे हम कहते चले जो धीमे गेंद यहां से कर रहे थे आमिर हमीद, तो इस मौके पर सईद बिन नासिर के लिए खासी दिक्कत हो रही थी। अब देखना पड़ेगा गेंदों में थोड़ा सा पेस मिलेगा अगर फ्लाइट के साथ, तो सईद बिन नासिर के बल्ले को भी ताकत मिलेगी। इस बार सईद बिन नासिर ने ड्राइव किया है ऑन साइड पे 1 रन के लिए। फहाद जब्बार तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर गेंद करेंगे। और इस बार लाइन से पूरी तरीके से भटके थे, उसका पूरा फायदा उठाया है फहाद जब्बार ने। खेल दिया है उसे डीप फाइन लेग बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। इस लूज गेंद का पूरी तरीके से फायदा उठाया। जो ही खराब गेंद गिरते देखा, लेग स्टंप के बाहर गिरते देखा, दिखाया उसे जैसी गेंद थी वैसा ही सुलूक किया इस बार फहाद जब्बार ने। फहाद जब्बार पहुंचे 10 रन पर 6 गेंदों का सामना करते हुए। फहाद सामना करेंगे अफसर नवाज का। और इस बार ऑफ ब्रेक गेंद मिडिल स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप की तरफ जाती हुई इस गेंद को अगले कदम पर विद द स्पिन टर्न किया ऑन साइड पे। तब तक के डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर आके फील्ड करते हैं। मौका था बल्लेबाजों के लिए 1 रन का। फहाद जब्बार पहुंचे 11 रन पर। अब सईद बिन नासिर सामना करेंगे अफसर नवाज की गेंदबाजी का। अफसर नवाज की गेंद लेग स्टंप पे पड़ी, इस गेंद को घूम गए हैं लेके गेंद को फाइन लेग की जानिब, लेकिन तब तक के मौका है फील्डर के पास फील्ड करके थ्रो करें। बल्लेबाज के लिए भी मौका था 1 रन का। 1 रन पूरा किया सईद बिन नासिर ने। अफसर नवाज फिर से तैयार। इस बार फिर से धीमे गेंद कम फ्लाइट के साथ उसको पूरी इज्जत देते हुए बॉलर की जानिब खेले हैं। फहाद रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। और इस बार बैकफुट पर गए, गेंद के ब्रेक को देखा, बैकफुट पर गए, ऑफ ड्राइव किया उसे कवर की जानिब अगेंस्ट द स्पिन 1 रन के लिए। और उस 1 रन के साथ फहाद जब्बार पहुंचे 12 रन पर। सईद खेल रहे हैं 54 रन पर। मजमूई स्कोर 96 रन 11वें ओवर के अख्तिताम पर। जो मौजूदा रन औसत चल रहा है वो 8.73 और प्रोजेक्टेड स्कोर जो है वो 175 का है। लेकिन हम यहाँ कहते चलें कि अगर ये प्रोजेक्ट स्कोर इसी रन औसत से खेलते रहे तो ये भी शायद चेस के लिए IMI उमर के बल्लेबाजों के लिए कम पड़ेंगे ये रन, क्योंकि जिस तरीके से अब तक पिछले मैचों में 200 रन चेस कर चुके हैं दोनों ही मैचों में IMI के बल्लेबाज, और उसमें कमाल की बारी ली थी डेप्थ में आके समी ने। तो जब तक समी होते हैं तो बल्लेबाजों को भी मान होता है, बल्लेबाजों को होप होती है, एक उम्मीद होती है। समी जब तक बैटिंग में हो, बल्लेबाजी में हो, तो बल्लेबाजों का
सर फखर से बुलंद ही रहता है कि हमारे नीचे कोई है आने वाला बड़े बल्लेबाज। और इसी के साथ मैं आगे का आंखों देखा हाल अपने साथी कमेंटेटर अंग्रेजी में उमर खान के हवाले माइक करता हूँ। नाउ ओवर टू उमर खान। Thank you, Mr. Mirza Kamar Beg. And this is the second time this has happened that the batsman has welcomed me with a six. What a way. So the run flow continues for Total Energy. Their journey to the final was amazing. Same goes for IMI-OMAR, who played absolutely brilliant cricket. 104 for 2 Total Energy. They lost Adil Khan for duck, and ever since then, this time dot ball to follow. Ever since then they've played brilliant cricket. Arshad Azim did a fair bit of recovery with his 28 of 18. Said bin Nasir batting brilliantly on 55 of 38. And Fahad Jabbar has joined him batting on 19. This time he's cut it towards the short third man, no run added. So they lost their second wicket for 64, and ever since then this partnership has been 40 runs so far of 5 overs. This time juicy full toss but hit straight to long off for 1. He could have hit it anywhere, but he hit it straight to the fielder. So 105, 9 runs of that over. 105 for 2 after 12 overs. This is the final of 35th Karachi GYMKHANA Omar Associates Ramazan Cricket Festival. IMI-OMAR facing off Total Energy. And we're all set for a wonderful game. If you look at the journey of both teams, IMI-OMAR has been expensive. They've conceded runs, but they've chased successfully as well. In the previous meeting between the two teams, Total Energy gave a target of 184 and IMI-OMAR chased it comfortably the last time in the group stage, but today it's a different scenario. It's the final. Total scored 183 in the previous meeting. They're looking stable to score something similar, but Total would definitely be eyeing above the 180 mark today, because IMI-OMAR is more than capable to chase over 200. We've seen them bat, especially they go hard in the power play. Especially the batsmen to watch out for IMI-OMAR, Afsar Nawaz, Farrokh Rizvi, who played brilliantly, scored a 100-run stand in the semi-final. And then of course Irfan Mushtaq up the order. Very hard-hitting players. And of course Mohammad Sami, who's won 2 back-to-back Man of the Match awards. But for now, it's Total Energy batting. Start of the 13th over. This time ball onto the middle stump. Nudge towards the square leg region for 1. Score taking now 106 for 2. They're batting at 8.75 runs an over.
This time used his feet and hit towards mid-wicket and straight to the fielder. Only 1 run added. So 2 runs of the first 2 deliveries. Afsar Nawaz continuing. First over went for 8 runs. This time down the leg and he's lifted it over fine leg. The weight seemed like a certain boundary, but only 2 runs. The ball had elevation but no power behind it. The fielder at deep square leg fields it. 2 runs added to the total. 4 runs now of 3 deliveries. This time he's connected, but straight to the fielder, chance, and he's caught. So Fahad Jabbar is caught on the mid-wicket boundary just when they were looking that they are stable, looking to accelerate. Fahad Jabbar lost his wicket. He's gone for 23. And Total Energy loses their 3rd wicket. Afsar Nawaz picks up a wicket. A well-judged catch on the mid-wicket boundary. Total are still batting at 8.61 runs an over. But this is a crucial period. Saeed bin Nasir is batting on 56, he's batting brilliantly. He's batting at a strike rate of 143. He's at 6 fours and a 6 so far. But the batsman who's walking in, Faisal Mirza, he has a huge role to play, as the next 3-4 overs are very crucial. If some way Total Energy can continue the run flow, get 8s and 9s and over and go hard in the last 4 overs, they can still get over 180. But IMI-OMAR will definitely be try to capitalize on the wicket, sneak in some cheap overs, and if by the 15th over mark somehow they can stop them to 125, they'll definitely be fancying themselves to keep them under 160. This time ball onto the middle stump, hit towards the long leg region for 1. So 5 runs of the over so far and a wicket, 1 delivery remaining. Faisal Mirza now on strike. It's important that he keep rotating the strike. This time shorter delivery on to the middle leg stump, hit towards mid-wicket. So Faisal Mirza off the mark of the first delivery. 111. Nelson on the board. 6 runs of that over. 111 for 3. Fourteenth over. This time he swept it firmly
towards the mid-wicket boundary, fielded well, only 1 run. Hayat Khan bowling his last over of the day. He's conceded 24 runs so far, picked up a wicket. Saeed bin Nasir now on strike. This time he's used his feet and he's connected it, but not well enough. It seemed like he's gone for the big hit. Got the toe end of the bat, and he'll be feeling lucky, as if it middle, it could have been caught on the boundary. But single added to the total, 113 for 3. We're into the 14th over. Hayat Khan set to bowl the next delivery. This time he used his feet again, and this time he's got the gap, but not the boundary. Only 1 run added. They thought for the second, but changed their mind. For 3 runs of the first 3 deliveries. Previous over went for 6. So IMI-OMAR continues to squeeze total energy in search of boundaries. This time is hit it straight to long on. Another single added. So 4 singles of 4 deliveries. This time it's top edge, chance for the fielder. And there's a run out appeal as well. Refer to the umpire. The fielders are discussing it was a towering ball. He could have caught it. So we're checking the run out. There was a chance for a catch, and then so the umpire has made his decision. He is safely in. It was a close call. Direct hits are always tricky, but he's safe. Total energy playing risky. They just lost Fahad Jabbar, and they're not getting runs. The previous over went for 6. This over so far went for 5, with 1 delivery remaining. Hayat Khan set to bowl last delivery of his quota of the day. He's conceded 28 runs so far and picked up a wicket. This time inside out. What a beautiful shot by Saeed Nasir. 4 and the cover region. So 120 up. With that boundary, 9 runs of that over, 120 for 3. And Saeed bin Nasir is playing a gem of an innings. Batting on 63 of 43 deliveries.
Afsar Nawaz to continue, single to long leg. So Saeed bin Nasser is back on strike. And what a player. If you look at his first class career, he scored 11,000 runs. That includes 26 centuries and 53 half centuries. This time used his feet and defended the ball as it was not in his slot. While in list A career, he scored 6 centuries and 23 half centuries at an average of 43.6. $123 for 3. Followed up by a boundary, so the runs are coming now. The batsman used his feet and hit towards mid-wicket. Saeed bin Nasser moved to 69 of 46. If he stays till the end, they're definitely eyeing the 180 mark. This time he's towards the long leg region. Fielder had a chance but unable to stop the ball. Another boundary, so the boundary flows continues. $132 for 3 after 15 overs. The previous over went for 12 runs. And the wicket of Fahad Jabbar has caused no damage as only that over went for 6. The previous over before this one went for 9 and last over went for 12. So 21 runs of the previous 2 overs. They're on track getting 10s and overs. If they go at the same rate, they can easily cross the 180 mark. They scored 183 against the same opposition in the group stages and IMI-OMAR successfully chased that target. So IMI-OMAR has a deep batting. They have the capability to chase 200 and they have chased 180, 190 and 200 in their previous games, even in the semi-finals. They chased 208 in the first semi-final yesterday. So they'll be backing themselves. And this time he's ballooned it up. Chance for the fielder. He tries his best but couldn't reach the ball. So 1 run added. 133 for 3. Faisal Mirza now on strike.
Dot ball to follow. Hazrat Amin is the bowler. Is bowling his first over of the day. Not a very good time to bowl in the last 5 overs of the innings. And this time well fielded by the fielder. Short fine leg. Great athleticism. Irfan Ali, the fielder. Remember, this is a 40+ tournament, and diving like that shows some fitness. Brilliant fielding. This time he's hit it towards the long on region, so no boundaries of the over yet. Just 4 runs, 3 runs of this over so far, or 4 deliveries. Faisal Mirza must be eyeing a boundary now. This time we want to make room, and umpire has signaled wide. I was waiting for that signal. For a moment I thought it's not, but yes, it is a wide. So 4 runs of 4 deliveries, 2 deliveries remaining in the 16th over, 136 for 3. Total energy. The final of the 35th Karachi Gymkhana Ramazan Cricket Festival. This time fuller deliveries, hit it straight to the fielder, and it was a chance, it was a catch, but the fielder looks in some pain. It's a no ball. Even if he would have caught it, it was a no ball plus a boundary. We're looking at the replay. It was a no ball, a full step no ball. It was a straightforward chance. He misjudged it. The ball went for a boundary, so it's a free hit. So he gave 3 runs of the first 4 deliveries, followed by a wide ball, then a no ball. No ball went for a boundary, and now it's a free hit. So technically he's given 6 extras. And what started off like a decent over has turned into a bad over. This time free hit, he's connected it, but only 1 run taken towards the long on boundary, but nonetheless 10 runs off the over so far, 1 delivery remaining. So their runs of the over, they at least needs 10. They need 10 runs and over from here every over. So 10 runs are there, 1 delivery remaining. This time full toss, and he's hit it towards the mid-wicket region for another boundary. 4 more runs added, so 14 runs of the over. He's conceded 11 runs of the last 2 deliveries. He started off the over decently, gave just 3 runs of the first 4 deliveries. Then a wide ball, a no ball went for a boundary, single and a boundary to end the over. So 14 runs of that over. A good over for total, and they're on track for 146.
This time another boundary, so back-to-back boundaries. The boundaries are coming, and at a suitable time. 146 was the score at the end of 16 overs, and they've managed 150 now on the very first delivery of the 17th over. Now Faisal Mirza into the act. He's batting on 19 of 11. Saeed bin Nasir is batting on 76 of 50 deliveries. And if somehow Saeed bin Nasir can go all the way till the 20th over, I'm sure he can reach another boundary. So the carnage continues. Boundary flows. Fours and sixes are coming, and IMI-OMAR has leaked a lot of runs. They've consistently conceded over 180 runs throughout the tournament, but their batting have always chased it. But this is the final. There must be the pressure, although IMI-OMAR chased 209 yesterday against KGA Club. But it is the final. When Fahad Jabbar wicket was down, even 160 was questionable. Fahad Jabbar was dismissed when the scoreboard was on 109. 45 runs have been added by Faisal Mirza and Saeed bin Nasir, who seems like he's struggling. It's not easy to bat in the heat. He's batting on 76. He's exhausted. There's no question in it. It's a real struggle, as many players are fasting, and in this heat, it's a real challenge. So fitness is tested to its limit. Two boundaries of the first two deliveries. Third delivery down the leg, signaled a wide. The batsman did a fairly good job to get out of the way. Wide ball signaled. This time outside off stump, another wide. The bowler should be a bit smarter. He should cut the pace of the ball. The typical reaction of a fast bowler is every time he gets hits for a boundary, they bowl faster and shorter. He should bowl smarter, cut the pace of the ball. Umpire seems to be unhappy because of the movement behind the side screen. This time bowled onto the middle stump. A better ball by the bowler. Single run added. So 11 runs of the first three deliveries, and now Saeed bin Nasir is on strike. It's very important how the bowler bowls now. Aftab Hamid, he's gone for plenty of runs today. He's ball wide again. That is not good bowling at all. He's conceded 50 runs of the day, and he still has 3 deliveries remaining. He should bowl the cutters, he should bowl the slower ones, he should bowl full balls.
This time another wide. Fourth wide of the over. 50 runs partnership comes up. 24 deliveries for the last 50 runs. And when Fahad Jabbar was dismissed, it seemed like 160, 70 would be tough to get, but there are 159 and still 3.3 overs to go. This time it was a chance, difficult chance, dropped, but 1 run added. So 14 runs of this over so far. 160. 160 up. And this time another boundary. So what an over for Total Energy, and what poor display of bowling by Aftab Hamid. He is having a bad day. 56 runs and still has 1 delivery remaining. $164 now, Total Energy. The bowler will take a sigh of relief as the last ball was a dot ball. He needed a few more of those, but Aftab Hamid finishes up with 56 runs without a wicket in his 4 overs. And Total Energy 164 after 17 overs. Mohammad Sami still has 1 over to bowl. First delivery and he's clubbed it. We have to look at the signal of the umpire, and he signaled 4 runs. The previous over went for 18 runs. And this over has started off with a boundary. They've scored plenty. They were 120 in 14 overs. And since then, it's all been Total Energy, getting 12s and 15s and 20 runs. This time he's middle it. Is it good enough? Good enough to find the fielder. Caught at long on, so Saeed bin Nasser dismissed for 81. But what a knock. Javed Mansoor picks up another catch. Some sigh of relief for IMI-OMAR, because the way Saeed Nasser was batting, even 200 was on the cards, but with this wicket, certainly
IMI-OMAR will start to believe that they can still squeeze in the last few overs. But what an innings by Saeed bin Nasir. 81 of 54 deliveries, 10 fours and a 6. What an innings in a final. Uses all his experience and class when it was needed the most, when he walked in. Total Energy lost their first wicket of Adil Khan for no runs on the board. And now when he's walking off, the team is 168. Brilliant batting by Saeed bin Nasir. We still have 15 deliveries remaining. And now Mazhar Hussain walks in. He's usually a very quick runner between the wickets. But this is the time where boundaries are required. First delivery, flighted delivery, and he's hit it towards mid-wicket. Very well timed. Normal days, Mazhar Hussain would run 2 or 3 on this one, but he just got 1 on this occasion. As now Faisal Mirza is on strike. 169 on the board, 14 deliveries remaining. Outside off stump and signal as a wide, so 170 up. For Total Energy, they scored 183 in the previous meeting where IMI-OMAR chased down that total. Another wide. This time hit towards the long on region for 1. And 1 it will be. They thought for the second run for a moment. Decided against it. So 2 deliveries remaining. Now 1 delivery remaining in the 18th over. 172 for 4. What can Total Energy do in the last 13 deliveries? This time, what a hit. He's come down the track, middled it. And Mazhar Hussain, what a shot! Straight in front of the side screen. 6 runs to end the over. 178, so 14 runs of the last over as well. And now they'll definitely be eyeing the 200. What a hit by Mazhar Hussain. Two overs remaining in the first innings of the final of the 35th Karachi GYMKHANA OMAR Associates Ramazan Cricket Festival. Javed Mansoor to bowl the 19th over. The batsman was not ready. It was a wide but cancelled by
the umpire. So dead ball declared. He has to re-bowl that one. First delivery of the 19th over, Javed Mansoor to bowl to Faisal Mirza, who's batting on 29 of 16 deliveries. Flighted deliveries, connected it well enough, but it's a long boundary out there. 2 runs added. It was a good hit, but the boundary is towards the longer side in the mid-wicket region from this end. We're playing on the middle strip, so the boundaries are bigger today on each side. This time another full delivery, full toss, low full toss, and it's a boundary. So Faisal Mirza continues the run flow, now batting on 31 of 17 deliveries. He's played his role. 184 total energy. They've surpassed their previous score that they scored against IMI-OMAR in their previous meeting. They scored 183 and lost the game. Today they're aiming for at least 200 from here. This time a juicy full toss, hit firmly towards the long leg region since it's a long boundary. So 2 runs added. They can get 3 off the throw, but they just settle down for 2. The throw are not good. They can definitely target another run off the throw, but it depends on the condition of the batter who's in for a while. Can he run 3s? That is the big question. So 186 now, 8 runs of this over so far of the first 3 deliveries to go. 186 for 4. This time he's hit it towards the mid-wicket region. Only a single, so 9 runs of 4 deliveries, 2 deliveries to go. Mazhar Hussain, who hit a lusty blow on the last delivery of the previous over. He's looking aggressive today. Can he repeat the action? Goes on the back foot, launches it to mid-wicket, straightforward catch. So no time wasted by Mazhar Hussain, but a decent innings as he scored 7 runs of 3 deliveries, scoring at over 200 strike rate in the last overs. So single, 6 and a wicket. He played his role, and now the next batsman will walk in with 7 deliveries remaining. Shahnawaz walking in. We've seen him hit the long balls, and that's exactly what his role is today. 7 deliveries. If somehow Total can manage to get 3 boundaries in the last 7 deliveries, they'll cross the 200 mark. IMI-OMAR chased 209 yesterday to make it to the finals. So they will be backing themselves. Last over most likely should be bowled by Mohammad Sami. We'll have to wait and watch. This time Fuller delivery hits straight over the head of the bowler, and what an effort. Hazrat Amin, the fielder, saving 2 runs for his team. So 2 runs to end the over, 8 runs, and now with 10 runs of that over. 188 on the board, 5 wickets down, last over of the innings.
Sami is not bowling the last over. It's Amir Hamid. This time it one bounce to the long on fielder, 1 run added. Shahnawaz off the mark. This time he's edged it. Another single. Shahnawaz off the mark. Faisal Mirza back on strike, who's batting on 40. 4 deliveries remaining, 190 on the board. Another single to long on. Dot ball to follow. What an over. 3 runs of this over so far. Two deliveries remaining. This time flighted delivery and hit straight. Chance for a run out and it's referred to the third umpire. If this match goes to the last over, how much will this last over matter, where only 3 runs have been scored so far, 1 delivery still remaining. And now we'll look at the replay to check whether it's a run out or not. So umpire is set with his decision. He is ready for his decision and he is out. So 3 runs of the last over. If this match goes to the wire in the last over, Amir Hamid has bowled a brilliant over so far. 3 runs. And now a new man will be on strike for the last delivery. Umair Ahmed will walk in. He's been brilliant with the ball. He's picked up 13 wickets in the tournament so far, the highest wicket taker of this tournament. Wide ball to follow, so another bonus run, 192. And this time hit straight to long off. I'll definitely come back for the second, so 194. And they've sneaked in the third, they've missed, they're coming back for the fourth. What comedy of errors, will they run the fifth one? No, they won't. So 4 runs, what seemed like a single, they've run 4 runs of the last delivery. Comedy of errors, and now they end up with 196. So 8 runs of the last over, but still brilliant over. 197 to chase for IMI-OMAR to become the champions of 35th Karachi GYMKHANA Umar Associates Ramazan Cricket Festival. We'll join you shortly after the innings break.
पहले बंद था जब मैं कर रहा था। यहाँ तो मैं चेक कर रहा था, वहाँ अपना तो लाइव वाला तो चल रहा था ना, बहुत चलना चाहिए। इनकी खैर है, कौन सुन रहा है यहाँ पर? यहाँ तो लाइव जा रहा है ना। यहाँ लाइव जाना चाहिए। हाँ ये रही यहाँ तो लाके लेकिन इसके बाद फिर छतरी होती है। हाँ तू क्यों सो रहा है? ये जो रोजा रखता है ये किसका रोजा सो रहा है? ये क्या आप भी स्क्रीन के आगे घूम रहे हो यार? सब यार देखो। हाँ अभी कहाँ क्या घूम रहे थे? हाँ तो इधर स्क्रीन ही है ना ये।
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and a very good afternoon here from the Karachi GYMKHANA cricket ground, the historic cricket ground, lush green and scorching sun, and getting to the players. We've had a few people get down because of the heat. We've had somebody servicing the batsman at the end of every 2 overs, and the batsman really couldn't take the second run. It's really tough out there. The heat is just dehydrating everybody here out in the middle. And this is the final match of the 35th Karachi GYMKHANA Ramazan Cricket Festival being played for the Omar Associates Trophy here. We've had a great tournament, and I'd like to take this opportunity to thank all those people behind the scenes who've done a great job to make this tournament a success. Special thanks to all the groundsmen who've done a fantastic job to give sporting wickets on which the game has been played well. It has been an exciting tournament because of their work. Then we have the umpires, the scorer, the scorer Rashid Aslam, who's been with this tournament now for over 7 years. Then we have live broadcast of this tournament. And Imran is here with us in the commentary box. He's looking after the live transmission and sports stream, and it's sports stream, and Rashid Aslam has done a great job here scoring. And now we have the 2 umpires slowly walking out to the middle, and this is umpires Wasimuddin and Rashid Khan. They've had a tough tournament. The heat has been bearing down on all and sundry. And the third umpire today is Mr. S.M. Babar. S.M. Babar is the third umpire. And the umpires are out there in the middle, and we are waiting for the Total Energy team as well as the opening batsman of IMI-OMAR. So it has been great. Covering this tournament has been a great tournament, and we hope that next year we will be back with the regular, normal Karachi GYMKHANA Ramazan Cricket Festival, which will be, inshallah, the 36th Karachi GYMKHANA Ramazan Cricket Festival. And while I'm at it, and okay, the IMI-OMAR opening batsman, it's Irfan Mushtaq and Hazrat Amin. Hazrat Amin walking out to the center, while the Total Energy team in a huddle, they are waiting for somebody, and there's a lot of, they're being given a pep talk. They have to defend 196 runs, which was scored by them. They have to defend this total, and let us see. They're still in the huddle, while the batsman
Irfan Mushtaq and Hazrat Amin out there in the middle. Hazrat Amin, the tall batsman, lanky batsman out there, and Irfan Mushtaq Imran is also is one of the main batsmen of the IMI-OMAR side, having words with umpire Wasimuddin and Rashid Khan out there in the middle. Let's see, there seems to be some hold up as to why the Total Energy team is there. Now they are being led out to the middle. Captain, was it? Led by the captain Mazhar Hussain, and they're walking out to the center. Game about the innings, IMI-OMAR innings about to get underway. While let us see, looks like it's going to be an exciting match, well fought match. That's what we expect. 196 is the total which can be defended. Whether it will be or not, we will see in the next 20 overs to be bowled here at the lush green historic cricket grounds of the Karachi Gymkhana. Gentle breeze blowing across the ground, and now we have a whole crowd of players at the Governor's House end, though the bowling will be started from the Club Road end. And let's see who's going to start the attack. Who's going to spearhead the from the Club Road end. Fielders moving to their positions, with the bowler guiding them. And Irfan Mushtaq will be facing Yusuf Habib, and Yusuf Habib has been bowling from that end, and he's Yusuf Habib to Irfan Mushtaq. Yusuf Habib. Fielders limbering up, stretching, and this is the last innings to be played of this tournament. And we have a mid-wicket on the fence, and who else? Yeah. A mid-wicket on the fence and a long on, mid-wicket and long on the fence, and umpire Wasimuddin signaling, umpire Rashid Khan signaling towards the scorer, and play about to begin. And this one is being turned on towards mid-wicket, and close-in fielder picks up, returns, and IMI-OMAR are 1 for no loss. And now Hazrat Amin taking guard from umpire Rashid Khan. Here we go. This time he's out. He's been given out. LBW. Sensational start here to the IMI-OMAR innings. Hazrat Amin, LBW bowled Yusuf Habib, and this was the third delivery. Second. This was the second delivery of the innings. And a great start for Total Energy. Hazrat Amin walking back, dejected, and you're gonna. And Irfan Ali, who
opened with Irfan Mushtaq in the last match. Now walking in. Irfan Ali. Hazrat Amin out for a first ball duck. And Yusuf Habib will be bowling to Irfan Ali. Yusuf Habib bowling from the club road end, and the proceedings are being supervised at the club road end by umpire Rashid Khan. Umpires have done a great job during this tournament. Yusuf Habib to Irfan Ali. It's time again of a vociferous appeal. Yusuf Habib trying to sweep the ball, failed to make contact, hit on the pad, but umpire Rashid Khan has nothing to do with that one. It's going to be Yusuf Habib. Yusuf Habib bowling a good line, good length. There he comes in. And we've been driven for a single to covers. The mid-off fielder runs around, picks up, and the batsman take a single, and that takes the score on two. This one lofted to mid-wicket, and the batsman get a single. It's not very far away from the fielder. And now it's going to be Yusuf to Imran Mushtaq, who is a key batsman for IMI-OMAR. And he's out! He's caught at a short fine leg. Sensational over by Yusuf Habib, and a great start here to this innings. This 2 wickets in the first over, and he still has a delivery to go. He has one more delivery to go, and Irfan Mushtaq, the danger man for Irfan Ali, the danger man for IMI-OMAR walking back, and this is quite a sensational start. And it's Tariq Zia who over हो गया तारिक Zia अफसर नवाज यार कौन बता रही है मुझे and Afsar Nawaz walking in, another very good batsman, and for IMI-OMAR. 3 रन हुए हैं भाई, 3. हाँ उसको बोलता रहता उसको समझ में नहीं आता इस वाले माइक से तो डायरेक्ट जा रही है. And from the governor's house end, the second over is being bowled by Imran Idris. He will bowl from the governor's house end, and he will bowl to danger man Irfan Mushtaq. He will be bowling to Irfan Mushtaq. Field being set, we have a long on the fence, and we have a mid-wicket on the fence. It's going to be Imran Idris
to Irfan Mushtaq, and umpire Wasimuddin supervising from the governor's house end. And here comes Imran. It's been driven, lovely, powerful drive, 4 runs to the widest point boundary. That takes the score on to 7. 7 for the loss of 2 wickets. A sensational first over by Yusuf Habib. And here comes Imran Idris to Irfan Mushtaq. Here he comes. Good delivery, good line and length. Treated with respect by Irfan Mushtaq. And here he comes. And my word, that was 6 the moment it left his bat. Very powerful, very perfect timing. And let's see if it's still in the ground, the ball, or has gone to the Pearl Continental compound. He's still waiting for the ball. And that takes the score on to 13 for the loss of 2 wickets, and it's going to be Imran Idris to Irfan Mushtaq, who is in a punishing mood right now, it seems. Okay. Imran has to bowl to his line, and this one, yes. And that takes the score on to 14. 14 for the loss of 2 wickets. And now it's going to be Imran Idris, and he will bowl to Afsan Nawaz. 2 very good batsmen out there in the middle. To Afsan Nawaz, here he comes in. And good line, good length, and Afsan Nawaz turns it around the corner for a comfortable single, takes the score on to 15. 15 for no loss. For the loss of 2 wickets. 15 for the loss of 2 wickets. And it's going to be Imran Idris to Irfan Mushtaq. Here he comes. Yeah, very good delivery, good line and length, and the batsman scurry across for a single. That takes the score on to 16. 16 for the loss of 2 wickets, and this is the end of the second over. Eventful start to this match, the innings. First over, we had 2 wickets. That was sensational. Great bowling by Yusuf Habib. Let's see if he can continue with that kind of bowling. Sun bearing down is getting a little better now. So IMI-OMAR batsmen have the advantage of this, because when Total Energy was batting, the batsmen were sapped and it was difficult for them to take doubles. They could only take singles. And here comes Yusuf Habib, and he will be bowling to Afsan Nawaz. Irfan Mushtaq, and my word, he deals only in 6s, and this is a 6 to mid wicket. And it's gone out of the ground onto the road. They need another ball. Okay. That 6 takes the score on to 22. 22 for the loss of 2 wickets. Great batting by Irfan Mushtaq. He seems to be in a hurry to go home for iftari. But seems so. Oh yes, I've been reminded, okay, that iftari is being hosted by the Karachi GYMKHANA here, so maybe he wants to rest a little before iftar. Yusuf Habib comes in and driven, great fielding there by 2 point, great fielding there by
Said bin Saad, Said bin Nasser. Here we go. And what this one to mid wicket, but for a single. And that takes the score on to 23. Yusuf Habib to Afsan Nawaz. Wrapped on the pad, no appeal of any sort. And the ball goes back to the bowler. Yusuf Habib turns round and he will slight adjustments in the field. And here he comes in. He will be bowling to Afsan Nawaz. He comes in. And soft hands. And a single. That takes the score on to 24. 24 was a loss of 2 wickets. And Yusuf Habib. Up to Irfan Mushtaq. Huh? To Irfan Mushtaq. Here he comes. And what a blistering cover drive by Irfan Mushtaq. 4 runs. And that takes the score on to 28. At the end of 3 overs, IMI-OMAR 28 for the loss of 2 wickets. In reply to total energy is 196 of the allotted 20 overs. That's the end of the 3rd over, and we have first 6 overs are with fielding restrictions. Only 2 fielders can be outside the inner circle. After which it will be revert to 4 fielders minimum inside the circle. And there's a bowling change from the governor's house, and it's going to be Shahnawaz to replace Imran Idris. Shahnawaz replacing Imran Idris, and he will be bowling to Afsan Nawaz. Yeah. Afsan Nawaz. Shahnawaz to Afsan Nawaz. Field being set, we have a mid wicket on the fence, and then we have, seems, here he comes. And vociferous appeal by Shahnawaz. Afsan Nawaz hit on the pad, but umpire Wazimuddin has nothing to do with that one. Probably missing leg stump. Here he comes. We don't have a proper view, he does. And this one is on the leg stump. And fielder misfielded, but still the batsman had already taken a single at square leg. That takes a score on to 29. Further fielding changes. Now we have because it's going to be Irfan Mushtaq, so we have a fielder a little deeper, and a square leg on the fence, mid on the fence, and here comes Shahnawaz to Irfan. He's been pulled to square leg for a single. Good bowling, good line and length by Shahnawaz, and that takes the score on to 30. 30, and this is the 4th over being bowled. It's going to be Shahnawaz, and he's going to be bowling to Afsan Nawaz. Got 2 good batsmen out there in the middle. Here comes Shahnawaz, and he's hit on the pad. Another appeal, but umpire Wazimuddin unmoved.
and no runs. Shahnawaz not very happy, and he is going to bowl to slight adjustment in his field, and he will bowl to Afsar Nawaz. Shahnawaz from the governor's house, and pass umpire Wasimuddin, here he comes, Afsar Nawaz, and it's been pulled by Afsar Nawaz to square leg. The fielder runs in, 1 run, and that takes the score on to 31. And that 31, and this is the fourth over being bowled, and it's Shahnawaz who's bowling it, and he'll be coming to bowl to Irfan Mushtaq. Slight adjustments in the field. It's always explosive when Irfan Mushtaq is facing. He's a very powerful hitter of the cricket ball. Here he comes. And yes, he's been caught at mid wicket. At square leg. Fantastic bowling by Shahnawaz, and it's the end of Irfan Mushtaq, and the total energy team jumping with joy because Irfan Mushtaq, a very, very dangerous batsman who can win a match in a few overs. Great hitter of the cricket ball. And he is walking out, and so it's now 31 for the loss of 3 wickets. 30 for the loss of 3 wickets. And it's Farooq. Farooq Rizvi. 31. And मैंने 31 कहा था, ये 30 का. And so that was the end of the 4th over. And good over by Shahnawaz. He got the priceless wicket of a key wicket of Irfan Mushtaq, and now we have Afsar Nawaz and Farooq Rizvi out there in the middle. And it's Yusuf Habib to continue. Yes, so this is his 3rd over. He gave the total energy a sensational start with taking 2 wickets in the 1st over, and now here he comes in and he will be bowling to Afsar Nawaz, and cut by Afsar Nawaz to point straight to the fielder, no runs. Score continues to stay at 31 for the loss of 3 wickets. And it's Yusuf Habib to Afsar Nawaz. And it's been, oh yes, great shot to mid-wicket. Lofted drive over the square leg by 4 runs. The fielder from mid-wicket tried his best to stop it, couldn't make it. Great shot by Afsar Nawaz, and takes the score on to 35. Yusuf Habib, and the quick run there by Afsar Nawaz, the batsman, and he was very well backed up by Farooq Rizvi, and that takes the score on to 36. 36 for the loss of 3 wickets, and this is a 5th over being bowled. Changes in the field. We have a long on the fence and a mid-wicket, squarish mid-wicket hit. And here comes Yusuf Habib. 1, 2, 3 for packed offside field here. Yusuf Habib will be bowling to Farooq Rizvi. And forward defensive. Good ball there by Yusuf Habib.
He's bowling to Farooq Rizvi. Here comes Yusuf to Farooq. This one outside the off stump. He tried to cut it, failed to make contact, collected by the keeper. No runs. Score stays at 36. Comes Yusuf, Farooq Rizvi. And this one, great shot, straight through the line, lofted drive to long off. And that is the end of the over. 40. And it's 40. 40 for the loss of 3 wickets. IMI-OMAR in reply to Total Energy's total score of 196. And they need to score 197 runs to win this match, while Total Energy has to defend 196. And let us see what happens from the Governor's House end. And this is the last over with the fielding restrictions. And it's Shahnawaz to continue. Shahnawaz, who took the key wicket of Irfan Mushtaq in his first over he bowled, and he's been given instructions by the captain, Mazhar Hussain. And we have a mid-wicket on the fence and a long on the fence, and now we have a square leg behind the umpire, fine leg with it at the circle, and now the wicket keeper giving some pointers to Shahnawaz while field is being moved around. And they have yet to settle in. And here we go. Yes, it's going to be Shahnawaz from the Governor's House and past umpire Wasimuddin. Here he comes. And clean bowl. This was a cross-batted shot by Afsan Nawaz, and another key wicket. And Shahnawaz seems to have the knack of getting these key batsmen. Clean bowl, centre stump. He was trying to cross-bat it to mid-wicket, failed to make contact, and the ball dislodged the furniture at the club road end. And that is the 4th wicket. And now the score is 40 for the loss of 4 wickets. IMI-OMAR, sensational bowling, great by Total Energy there, and it's gone out. You're all right. And it's going to be now Mohammad Sami, Pakistan international. Mohammad Sami walking in, and he has been the man of the match for the last 2 matches. Batting, great batting by Mohammad Sami. I distinctly remember the 3 sixes he hit in 1 over yesterday and changed the flow of the match towards his team side, and IMI-OMAR won that match. And now Mohammad Sami walking into a difficult situation, and he has been the man who gave 2 victories to IMI-OMAR with his batting, not with his bowling. He's been batting, wonderful batting has been shown, great hitting, and now he's out there in the middle because Shahnawaz had Afsan Nawaz clean bowled. Mohammad Sami now. And he will be bowling. Shahnawaz who is bowling from the Governor's House, and fielders getting back into position, and mid-wicket on the fence, long on the fence. Yes. So it's going to be Shahnawaz to Mohammad Sami.
Here he comes. Pass umpire Waseemuddin to Muhammad Sami. And very careful forward defensive shot there by Sami. Rolled over to short mid wicket. No runs. Shahnawaz to Muhammad Sami. And this one even dancing down the wicket. A lofted drive to long on, wideish long on for a single. He has shown his intentions. He's going to go after the bowling. And now it's going to be Shahnawaz Farah Rizvi, who's taking guard from umpire Waseemuddin. Here comes Shahnawaz to Farah Rizvi. This one straying outside the off stump, and the ball got it what it deserved. 4 runs to the cover point boundary. Great shot all along the ground. He had a lot of room to play that one. This one ball was short and wide and just got what it deserved. The captain of Total Energy now giving pointers to Shahnawaz, and he's actively participating in this game. He desperately wants to win it, and he can smell smell an opening there possible. And now victory, and now it's going to be Shahnawaz going round the wicket, and he will be bowling to Farah Habib round the wicket. And this one, again, a lovely shot there, straight through the covers, 4 runs. And that takes the score on to 49. 49 for the loss of 4 wickets, IMI-OMAR, and they've got 2 key batsmen in there, Farah Rizvi and Muhammad Sami. And it's going to be Shahnawaz. He's straying in line, he's straying in length, and he's getting what these deliveries deserve. Here he comes and bowls to a better delivery there, and a good run. And that takes the score, and that's the 50 of the IMI-OMAR innings. And at the end of 6 overs, IMI-OMAR are 50 for the loss of 4 wickets. They have lost maybe a couple of wickets more than they would have wanted to, and the key wickets. And let us see what they're going to do from the club road end. And this will be his 4th over. So they're going to bowl Yusuf Habib out, and he's going to be bowling to Muhammad Sami. Yusuf Habib. Sami? No. Farah Rizvi, sorry, they had crossed over. The batsman had crossed over on the last bowler. It's going to be Yusuf Habib to Farah Rizvi. Field being set, and this now the fielding restrictions are over. This has been cut. Brilliant piece of fielding there, and he's definitely saved 3 runs for the Total Energy. Great fielding, and that takes the score on to 51. Oh, no. Yusuf Habib now to Muhammad Sami. And Sami's driven it towards long on, all along the ground for a comfortable single, and that takes score on to 52. 52. And here comes Yusuf Habib, and over the heads of the umpire and the bowler, 4 runs straight into the side screen, and that takes the score on to 56.
56. And Yusuf Habib coming in for some stick at the hands of the this one, a better delivery, and batsman crossover for a single. That takes the score on to 57. And now it's going to be Yusuf Habib, and he will be bowling to Mohammad Sami. Right? Yes. Yusuf Habib to Mohammad Sami. We have two men on the fence, mid-wicket and long on, three men in fact. And he's bowled, cleaned him up. Mohammad Sami went dancing down the wicket. He was looking to throw him onto Club Road, but failed to make contact, and the ball dislodged the furniture at the governor's house. And that is a telling blow by Yusuf Habib. And that the score now is 56, 51, 57 for the loss of 5 wickets. 57 for 5, and Sami was in fact not feeling well. He had come out before the end of the Tapal and Total Energy innings, and I think he probably is not well. And we now have कौन आ रहे भाई? ये कैसा? And Javed Mansoor walking in. Javed Mansoor walking into a very grim situation for the IMI-OMAR team, and he's having a word with Farak Rizvi, and they're trying to come up with a strategy, and he's going to be facing Yusuf Habib, his last over. In the field, we have a fielder on the fence at cover, long off, long on, mid-wicket and fine leg. And this has been driven towards long off, gently driven, and the batsman crossover for a single, then that takes the score on to 58. At the end of 7 overs, IMI-OMAR are 58 for the loss of 5 wickets. Great bowling by Yusuf Habib. Can you let me know what he did? He got 3 key wickets for 32 runs in his allotted 4 wickets in his allotted. Oh, 4 rolls. 3 wickets, 32 runs in his allotted quota of 4 overs. And with that, goodbye to commenting for the 35th Karachi GYMKHANA Ramazan Cricket Festival for the Umar Associates Trophy, and I thank everybody who was associated, who has done a great job for this tournament, and I hope, and great job done by the management of Karachi GYMKHANA, and I hope next year we'll have a full-fledged Karachi GYMKHANA Ramazan Cricket Festival, the 36th one. And now I'm handing you over to Mirza Qamar Beg to continue the commentary, and he will be commenting in Urdu. Mirza Qamar Beg, good luck. Thank you, sir. Thank you, sir. Goodbye. एक साल अगले साल मुलाकात इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की शुक्रिया जनाब मियाँ शौकत हुसैन साहब हमें अपनी अंग्रेज़ी कमेंट्री से लुत्फ़ अंदोज़ कर रहे थे। मियाँ शौकत जब अंग्रेज़ी की कमेंट्री करते हैं तो बहुत ही यहाँ क्रिकेट का मज़ा दुबाला हो जाता है, जो कि हम
उमर कुरैशी के दौर में पहुंच जाते हैं, सिमिलर टू उमर कुरैशी हैं। और अब 1 साल हमें इंतज़ार करना पड़ेगा उनकी दिल फरेब अंग्रेज़ी कमेंट्री के लिए। शुक्रिया मियाँ शौकत साहब हमारे बीच मौजूद थे और इस बीच 4 रन हासिल किए हैं। यहाँ इस बार कट किया है बल्लेबाज हैं जावेद मंसूर, सामना करेंगे उमर अहमद है गेंदबाज। उमर अहमद कमेंट्री बॉक्स की ओर से दाहिने हाथ के ऑफ ब्रेक गेंदबाज। इस बार फ्लाइट गेंद थी, कम फ्लाइट के साथ उसको धीरे से खेला है ऑन साइड पे 1 रन के लिए। उमर अब गेंद करेंगे फर्रुख रिजवी को। फर्रुख रिजवी खेल रहे हैं 19 रन की बारी के साथ 9 गेंदों का सामना किया है और खासी उम्मीद है अपने बल्लेबाजों के लिए, जबकि जावेद मंसूर भी जब तक ये साझेदारी रहेगी छठे विकेट की देखना पड़ेगा कहाँ तक के ये बल्लेबाजों को लेके चलते हैं। शुरुआत में जो झटके लगे बल्लेबाजों के लिए खासी हद तक पीछे चले गए हैं। IMI उमर के बल्लेबाज शुरुआत में इरफान मुश्ताक जो कि 26 रन की अच्छी बारी ले रहे थे, 13 गेंदों का सामना किया था, 2 चौके और 2 छक्के लगाए थे। 200 के स्ट्राइक रेट से बारी ली थी इरफान मुश्ताक ने, लेकिन जब वो आउट हुए तो एक उम्मीद का बहुत बड़ा चिराग बुझा था IMI उमर के लिए। लेकिन उसके बाद हजरत अमीन भी बगैर कोई रन बनाए आउट हुए थे और उसके बाद इरफान अली भी 1 रन बनाने के बाद आउट हुए। अफसर नवाज भी 9 रन करके अपने बल्लेबाजों को छोड़ते हुए पवेलियन में चले गए थे। फर्रुख रिजवी मौजूद हैं 22 रन पर। समी जो कि एक बहुत बड़ी उम्मीद थी मोहम्मद समी के रूप में, वो भी पवेलियन में चले गए हैं जल्दी साथ छोड़ के अपने बल्लेबाजों को। और इस बीच वाइड बॉल का इशारा यहाँ एम्पायर की जानिब से। उमर अहमद थे ये गेंदबाज जो अपनी लाइन से पूरी तरीके से भटके थे। एम्पायर इस बार फिर से भटके हैं लाइन से और इस बार फिर से वसीमुद्दीन का इशारा वाइड बॉल का और ये एक और रन वाइड के रूप में यहाँ IMI उमर की झोली में। 68 रन 5 विकेट खोकर और इस बार ऑफ स्टंप पे पड़ी गेंद को बैक फुटर गए, खेला है उसे लॉन्ग ऑफ की जानिब, तब तक के फील्डर फील्ड करके थ्रो करे। मौका है बल्लेबाजों के लिए 1 रन का और 1 रन के साथ 69 रन 69 5 विकेट खोकर IMI उमर टॉस जीतकर 197 रन का पीछा करते हुए इस फाइनल में 35वां कराची जिमखाना रमजान क्रिकेट फेस्टिवल 2022 का ये मैच खेला जा रहा है। उमर एसोसिएट के ताउन से आज का मैच जो खेला जा रहा है फाइनल, ये टोटल एनर्जी और IMI उमर के बीच खेला जा रहा है। टोटल एनर्जी 197 रन का हदफ सजाया था, उसका पीछा कर रहे हैं। IMI उमर 59 रन पर 5 विकेट खो चुके हैं और अब मौजूदा रन औसत है वो 8.63, रिक्वायर औसत 10.67। लेकिन 20-20 के मैचों में 10.11 का औसत जो है वो अगर बल्लेबाज हिम्मत दिखाएं, ताकत दिखाएं तो ये बहुत बड़ा रिक्वायर औसत नहीं होता। और इस बीच एक 4 रन दिखाए हैं
बल्लेबाज जावेद मंसूर ने इस तरीके की हिम्मत वाली बारी लेने पड़ेगी बल्लेबाजों को। और ये छठे विकेट की जो शराकत है, छठे विकेट की जो साझेदारी है, उसको सजाना होगा। अब तक 16 रन बनाए हैं और सलाहियत रखते हैं दोनों ही बल्लेबाज मैच को आखिर तक ले जाने के लिए। रन औसत अभी कहना पड़ेगा इतना दूर नहीं हुआ है उनसे, लेकिन विकेट पे खड़ा रहना जरूरी है, साझेदारी करना जरूरी है। एक दो बाउंड्रियों का खेल है, लेकिन एक दो बाउंड्रियां जरूर इन्हें लगानी पड़ेंगी हर ओवर में, तो रन औसत को काबू में रखना पड़ेगा। वहां मोहतशिम अली बाइने हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज बाइने हाथ से राउंड द विकेट, फ्लाइटेड गेंद को लिया है, मिडिल स्टंप से पिक किया है, बिल्कुल स्ट्रेटर शॉट देखना पड़ेगा। एम्पायर रशीद खान का इशारा, 6 रन। और जिस तरीके से हम कह रहे हैं हिम्मत दिखानी पड़ेगी बल्लेबाजों को। रन औसत बहुत दूर नहीं है, लेकिन बल्लेबाजों को खड़ा रहना पड़ेगा। ये साझेदारी एक बड़ी दिखानी पड़ेगी अगर मैच में वापस आना है। 117 रन चाहिए 69 गेंदों पे, 10.17 के औसत से। मोहतशिम अली बाइने हाथ से इस बार अच्छी गेंद, उसको अच्छे अंदाज में खेले हैं धीरे से ऑन साइड पे, तब तक कि मोहतशिम खुद जाके फील्ड करें। 1 रन पूरा किया और दूसरा रन भी पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। जो ही मोहतशिम को अपनी गेंद पर फील्ड करते देखा और मिड ऑन के फील्डर को सुस्त आते देखा, दूसरा रन भी चुराया है दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी दौड़ विकेटों के दरमियान दोनों बल्लेबाजों की, और इस किस्म की दौड़ भी लगानी होंगी बल्लेबाजों को। 2 बाउंड्रियों के साथ साथ मैच को अगर आखिर तक ले जाना है और विकेट भी संभालनी होगी तो बहुत ही मुशक्कतें उठानी पड़ेंगी बल्लेबाजों को, जो कि खासे दूर हैं मैच से। लेकिन फिर भी 20-20 की क्रिकेट ऐसी होती है कि आखिर तक कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक आखिरी ओवर तक का खेल ना हो जाए। और इस बार बहुत अच्छी गेंद, लेकिन उसको उतने ही अच्छे अंदाज में खेलते ही रन के लिए दौड़ पड़े। और इस ओवर में 13 रन बना चुके हैं बल्लेबाज, 14 रन बना चुके हैं। और इसी तरह के ओवर बटोरने होंगे, 2 बाउंड्री के साथ सिंगल 2, इस तरीके से अगर कंट्रोल के साथ खेलते रहे तो एक नया रूप आ जाएगा मैच में। इस बीच एक और रन वहां लिया है बल्लेबाज से जावेद मंसूर, अच्छी बारी ले रहे हैं 31 रन की 14 गेंदों का सामना करते हुए। 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 221 रन का स्ट्राइक रेट है जावेद मंसूर का, और जबकि फर्रुख रिजवी का 221 रन का स्ट्राइक रेट है। अच्छी बारी ले रहे हैं फर्रुख रिजवी। अब उनके साथ हैं जावेद मंसूर, जो कि छठे विकेट की साझेदारी में मसरूफ हैं। अब तक 27 रन बना चुके हैं 13 गेंदों का सामना करते हुए। वहां मोहतशिम उमर अहमद आए हैं अपनी गेंदबाजी की जिम्मेदारियां संभालने कमेंट्री बॉक्स की ओर से। उनके लिए फील्डिंग की सजावट, 4 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 5 ऑन साइड पे। 84 रन लगा दिए। और इस बार कम फ्लाइट के साथ की गई इस गेंद को पीछे गिरते देखा, बैकफुट पर गए, पुल किया है उसे डीप मिड ऑन बाउंड्री की तरफ, खूबसूरती के साथ बल्ले के बीचों बीच लेते हुए बिल्कुल गेंद कारपेट के सहारे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। एम्पायर वसीमुद्दीन का इशारा। और इस तरीके की मेहनत में इस तरीके के जोखिम उठाने होंगे बल्लेबाजों को, रन निकालने होंगे जिस तरीके से इस बार जावेद मंसूर ने ये 4 रन हासिल किए हैं। और अगर एक ओवर में 2 बाउंड्रियां आ जाएं और उसके साथ सब्र करना पड़ेगा 1-2 रन के साथ, तो मैच अच्छा जाएगा, आगे तक जाएगा। एक दिलचस्प फाइनल नजर आएगा यहाँ कराची जिमखाना के ग्रोइंग कारपेट पर। और इस बार कट किया है खूबसूरती के साथ
जावेद मंसूर ने वहां तब तक के डीप कवर के फील्डर आके फील्ड करें। मौका है बल्लेबाजों को 1 रन का। जो ही कवर के फील्डर को गेंद पर झपटते देखा, दूसरे रन की हिम्मत ना दिखा पाए बल्लेबाज और अपने आप को 1 ही रन पर महदूद रखा। जावेद मंसूर पहुंचे 18 रन पर 10 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौकों की मदद से 180 के स्ट्राइक रेट के साथ। उमेर अहमद तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 4 ऑन साइड पे, स्क्वायर लेग लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए, लॉन्ग ऑन भी लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए। अगली गेंद लेग ब्रेक के अंदाज में की गई। इस गेंद को खेल दिया, उसे मिडिल स्टंप से पिक किया, फ्लैटेड गेंद को। गेंद उड़ान भरती हुई, मिड ऑन के फील्डर देखते ही रहे गेंद की उड़ान को। गेंद उड़ान भरती हुई गवर्नर हाउस में जाके गिरी। वहां अंपायर वसीमुद्दीन का इशारा 6 रन। और जैसा कि हम कह रहे हैं, इस तरीके के दिक्कतें और मेहनत करनी पड़ेगी, दिक्कतें उठाना पड़ेंगी, बल्लेबाजों को जान मारनी पड़ेगी, क्योंकि मैच में उनके लिए बहुत ही फर्रुख रिजवी पहुंचे 37 रन पर 15 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौके और 2 छक्के लगाए हैं और 246 रन के स्ट्राइक रेट से बारी ले रहे हैं फर्रुख, जबकि उनका साथ दे रहे हैं जावेद मंसूर, जिन्होंने 18 रन बनाए हैं, 10 गेंदों का सामना किया है 3 चौकों की मदद से 180 रन के स्ट्राइक रेट से। और वहां अंपायर रशीद और अंपायर वसीमुद्दीन गेंदों के चुनाव में, जो कि ये गेंद गवर्नर हाउस में जाके गिरी थी, दोनों काफी सीजन्ड अंपायर हैं। अंपायर वसीमुद्दीन और अंपायर रशीद काफी सीनियर अंपायर हैं। गेंदों का चुनाव भी बड़ी तवज्जो के साथ करना पड़ता है। अगर 10 ओवर के बाद गेंद को चुनाव करना पड़े तो ये तजर्बा होता है कि उस मेल की गेंद को क्योंकि ये दोनों अंपायर मरूम अंपायर रियाजुद्दीन के शागिर्दों में से हैं, वो कुछ काफी सिखा गए। और ये इस बार मैच फिर से पीछे चला गया, फिर से गिर गया है, फिर से छूट गया है यहाँ IMI उमर के बल्लेबाजों से, जबकि फर्रुख रिजवी जो कि अच्छी बारी ले रहे थे, एक आसान सा कैच दे बैठे हैं, कवर के ऊपर खेलना चाहते थे, कदमों का इस्तेमाल करते हुए कदमों का पूरी तरीके से इस्तेमाल ना कर पाए, बल्ले के बीचों बीच में ना ले पाए, और बल्ले में वो दम नहीं था, वो कूदा नहीं था जो मिड ऑफ के फील्डर को क्लियर कर सकता, जहां मिड ऑफ के फील्डर ने खिलाड़ी ने आसानी के साथ कैच लेते हुए फर्रुख रिजवी को पवेलियन की जानिब भेजा। और फर्रुख रिजवी बोझल कदमों के साथ अपनी खिलाड़ियों की कश्ती को मैदान में छोड़ते हुए आ रहे हैं। हिचकोले खाती हुई कश्ती। अब देखना पड़ेगा कौन सा बल्लेबाज है जो संभालता है। फर्रुख रिजवी ने अच्छी बारी ली, 37 रन बनाए, 16 गेंदों का सामना किया, 4 चौके 2 छक्कों की मदद से 231 रन के स्ट्राइक रेट से बारी खेली, लेकिन बदकिस्मती से इस बारी को कैरी नहीं कर सके, आगे नहीं ले जा सके और अब पूरे तरीके से यहाँ मैच में आ गए हैं। टोटल एनर्जी के खिलाड़ी जिस तरीके से ये 6वीं विकेट चटकाई है, बहुत ही बड़ा सदमा है और ये बहुत ही बड़ा झटका है IMI बल्लेबाजों के लिए, 6वां झटका। और अब आने वाले बल्लेबाजों में तनवीर हुसैन जो अभी क्रीज पर गए हैं, और आने वाले बल्लेबाजों में आमिर हमीद, हयात खान, आफ्ताब हमीद, ये 4 बल्लेबाज हैं जो पवेलियन में बैठे हैं। इस बीच उमेर अहमद फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर गेंद करेंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज को इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, ड्राइव किया सीधा मिड ऑफ पे खड़े फील्डर के पास। रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए।
और इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप पे पड़ी, इस गेंद को कट किया है और खेलते ही दौड़ पड़े, न देखा सामने वाले बल्लेबाज को और दौड़ते ही चले आए जहां विकेट कीपर ने मोहतशिम अली थे जिन्होंने पॉइंट पे गेंद को लपकते ही थ्रो की विकेट कीपर के पास, और वहां कहना पड़ेगा बल्लेबाज गेंद खेलते ही दौड़ते चला है। उन्होंने नॉन स्ट्राइकर एंड पे बल्लेबाज को देखा ही नहीं, उन्होंने बिल्कुल रिस्पांस नहीं दिया था, वो दौड़ते चले आए और अपने बल्लेबाजों को बहुत पीछे छोड़ते हुए आ रहे हैं। बहुत बड़ी गलती की है। 10 ओवर 95। तनवीर हुसैन थे ये बल्लेबाज जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पे जावेद मंसूर ने कोई रिस्पांस नहीं दिया था, अकेले ही वो दौड़े, इतना मौका नहीं था कि पीछे पलटते। पचानवे रन 7 विकेट खोकर 10वें ओवर के अख्तिताम पर IMI उमर टॉस जीतकर 197 रन का पीछा करते हुए इस फाइनल मैच में जो कि खेला जा रहा है कराची जिमखाना के गोइंग कारपेट पर 35वां कराची जिमखाना रमज़ान क्रिकेट फेस्टिवल 2022 का ये मैच खेला जा रहा है उमर एसोसिएट के ताउन से। और ये फाइनल तकरीबन एक तरफा होता हुआ जो उम्मीद थी IMI के कप्तान को टॉस जीतकर जो बल्लेबाजी का सेहरा लिया था और पुरुमीद थे क्योंकि पिछला ट्रैक रिकॉर्ड जो था 3 मैचों में लगभग 200 रन चेस किए थे IMI वालों ने, तो इस बार भी उन्हें मान था अपनी इस बल्लेबाजी पर, लेकिन शुरुआत में जो झटके खाए हैं और जो गेंदबाजी की है गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है, खास करके यूसुफ हबीब जिन्होंने 4 ओवर में 32 रन दिए और 3 विकेट चटकाई हैं और 8.0 की इकनॉमी से बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की, पूरी तरीके से बैकफुट पर किया है यूसुफ हबीब ने बल्लेबाजों को। IMI के शुरुआत से ही झटके लगाए हैं यूसुफ हबीब ने बल्लेबाजों के लिए। पहला झटका जो इरफान मुश्ताक की सूरत में लगा था, उसके बाद हजरत अमीन को आउट किया था यूसुफ हबीब ने, और उसके बाद इमरान इदरीस को भी यूसुफ हबीब ने पवेलियन की राह दिखाई थी। आफ्ताब हमीद हैं वहाँ गेंदबाजी की तैयारी में, नहीं इमरान इदरीस हैं फॉरेन की ओर से गेंद करेंगे जावेद मंसूर को, और इस बार बैकफुट पर रख के खेलना चाहते थे, चूंकि पूरी तरीके से विकेट के पीछे से आदिल खान आए और कुछ उनकी मदद की क्योंकि ये गेंद थाई पे खाई थी बल्कि नी पे लगी थी। कुछ तकलीफ में ज़रूर हैं जावेद मंसूर। इमरान इदरीस फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, बाईं हाथ से राउंड द विकेट, और इस बार पुल किया है, देखना पड़ेगा तब तक के डीप मिडाउन से फील्डर आके फील्ड करते मौका था बल्लेबाजों के लिए। 1 रन का 1 रन आसानी के साथ पूरा किया जावेद मंसूर से। देखना पड़ेगा किस तरीके से आखिर तक लड़ते हैं जावेद मंसूर। रन औसत जो है वो 10.63 का है और 101 रन चाहिए 57 गेंदों पर, और इस बार कट करना चाहते थे लेग ब्रेक गेंद पे, गेंद की कहीं भी लाइन में नहीं थे, चूके गेंद से गेंद गई विकेट कीपर के पास। आफ्ताब हमीद थे बल्लेबाज, लेग ब्रेक गेंद को कट करना चाहते थे, चूक गए थे पूरी तरीके से, और इस बार
कामयाब हुए, लेकिन वहाँ बहुत कमाल की फील्डर शॉर्ट थर्ड मैन की जानिब से 3 रन बचाए हैं। अगर ये छोड़ देते तो 4 रन की सूरत में यहाँ रन मिलते, लेकिन 3 रन बचाए हैं। बहुत ही अच्छी फील्डिंग हुआ पॉइंट के फील्डर की जानिब से, खूबसूरत कट किया था वहाँ आफ्ताब हमीद ने। अब जावेद मंसूर सामना करेंगे और इस बार कम फ्लाइट के साथ इस गेंद को पुल किया है। तब तक के डीप में डाउन के फील्डर आए हैं, फील्ड कर रहे हैं। मौका है बल्लेबाजों के लिए 1 रन का, और इसी के साथ 11वें ओवर का खेल इख्तिताम को पहुंचा। 11वें ओवर के इख्तिताम पर 98 रन 7 विकेट खोकर IMI उमर 196 रन का पीछा करते हुए यहाँ 20-20 के इस मैच में ये और यहाँ हमारे कैमरामैनों ने जिस तरीके से कवरेज कर रहे हैं ये मनाजिर पवेलियन के और VIP बॉक्स के, सीरियस करवा लो आजा, मैं गारंटी लेता हूँ। चले अब थोड़ा देर मॉनिटर कीजिएगा। उमेर अहमद गेंदबाजी जारी रखेंगे यहाँ कमेंट्री बॉक्स की ओर से। दाहिने हाथ से राउंड द विकेट इस बार निकले हैं, कदमों का इस्तेमाल किया है बल्लेबाज ने और बिल्कुल स्ट्रेटर खेले हैं। गेंद उड़ान भरती हुई 6 रनों के लिए। और अब हम यहाँ जहमत देते हैं कराची जिमखाना के 2 यंगस्टर यंग प्लेयर आदम और जैद अपने यहाँ कमेंट्री बॉक्स में आए हैं। हम उनसे कहेंगे कुछ कमेंट्री के लिए। देखते हैं दोनों यंग हैं किस तरीके से संभालते हैं कमेंट्री बॉक्स को। आइए आदम और जैद, पहले दोनों साथ करिए। ये आज आखिरी दिन है, मैं बोल रहा हूँ गिरेंगे आज। अस्सलाम वालेकुम। एक ही माइक के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम कराची जिमखाना के 35वें उमर एसोसिएट्स रमज़ान क्रिकेट फेस्टिवल पर हैं और यहाँ का आज फाइनल चल रहा है IMI उमर और टोटल एनर्जी के दरमियान। आज मैं और जैद एक साथ कराची जिमखाना की शान, जैद अदनान आदम ईसा। अभी 11.2 ओवर्स पे 105 रन हुए हैं IMI उमर के 7 विकेट के नुकसान पे। उनको 92 रन चाहिए 8 ओवर 3 बॉलों में। और ये उमेर बॉल करते हुए और एक कट खेलने की कोशिश, लेकिन कीपर के हाथ में बॉल पहुंच गई। और ये आफ्ताब हमीद बॉल फेस करते हुए उमेर की, और उन्होंने कट किया और ये कवर के जानिब डीप कवर के फील्डर आए बॉल पे और 1 रन हासिल हुआ। और ये 12 ओवर के इख्तिताम पे 106 रन 7 विकेट के नुकसान पे IMI उमर को 91 रन चाहिए 48 ओवर्स में।
पागल हो यार, फाइनल चल, अरे फाइनल चल रहा है, बहुत लोग बैठे हैं, अरे नहीं करो, पागल हो क्या? तुम बोलो आओ। कह दो सारी बातें इसमें मना नहीं करो, इसको कह दो। बंद हो गया, बंद हो गया, बंद हो गया, वो बंद हो गया, खुल गया, खुल गया। और ये इमरान इदरीस आए हैं बॉल करने, आफ्ताब हमीद बॉल फेस करेंगे। और ये 13वां ओवर शुरू हो रहा है यहाँ, और IMI उमर को 91 रन चाहिए। इमरान अपने खाते का तीसरा ओवर कराएंगे। यहाँ आफ्ताब हमीद बॉल फेस करते हुए, और इन्होंने ये कट खेला और 1 रन की जानिब। एक रन हासिल हुआ इस बॉल पर। और ये जावेद मंसूर बॉल फेस करते हुए, इमरान इदरीस की इनकी ओवर की दूसरी बॉल है ये, 100 नंबर बॉल। और आज टोटल एनर्जी के कैप्टन मजहर हुसैन बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी टीम को लीड किया है, और ये ऐसे लग ही रहा है कि विक्ट्री की तरफ जा रहे हैं। और ये बड़ा शॉट खेला, और ये सिर्फ 2 रन हासिल, 1 रन हासिल होगा, सिर्फ 1 रन भागे हैं ये। आज हमारे साथ पैनल में बैठे हुए हैं राशिद असलम, बहुत ही सीनियर स्कोरर हैं यहाँ PCB के। और ये आफ्ताब हमीद बॉल फेस करते हुए, और ये ओवर की 3 बॉलें हो चुकी हैं, और ये शॉट खेलने गए लेकिन कट की जाने, और ये बॉल फेंकी है, और ये आउट होने का मौका बच गया है। बैट्समैन पहुंच गए क्रीज तक। मुझे आने दो। अच्छा इसको ये ओवर खत्म हो जाए फिर आ जाओ। ये ओवर खत्म हो जाए। और ये अपने ओवर की 5वीं बॉल करते आते हुए इमरान इदरीस, और ये एम्पायर की तरफ से वाइट बॉल का इशारा। और ये अपनी ओवर की 5वीं बॉल करते हुए, और बड़ा शॉट खेलने गए लेकिन बीट हो गए, और कीपर की तरफ बॉल गई। बहुत ही शानदार बॉल बॉलर की तरफ से, क्लास। ये है इमरान इदरीस, क्लास। अभी नदीम उमर आएंगे टीवी पे, उनको बता दिया कि नदीम उमर जो है वो और ये ओवर की 6ठी बॉल करते हुए, और उन्होंने बड़ा शॉट खेला, 6 रन। बहुत ही शानदार शॉट जावेद मंसूर की तरफ से। ये है जावेद मंसूर, क्लास। क्लास। 116 और ये टीवी पे आए हुए हैं नदीम उमर, और ये क्वेटा ग्लैडिएटर के ओनर हैं नदीम उमर, और ये इस वक्त टीवी की जानिब हमें दिख रहे हैं, ड्रेसिंग रूम में खड़े हुए हैं कराची जिमखाना के। अब हम हैंड ओवर कर, ये टूर्नामेंट उमर एसोसिएट के ताबन से हो रहा है, और ये नदीम उमर साहब की वजह से ये टूर्नामेंट हो रहा है। और मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ ये कमेंट्री पैनल साइम फराज, एक्स कैप्टन कराची जिमखाना अंडर 19।
ये लास्ट गेम है इस पे देख के इंट्रोड्यूस करना है एक सेकंड इंट्रोड्यूस करना जरा मुझे करो इंट्रोड्यूस कर लो Here we can see on the screens right now Mr. Nadeem Umar, owner of Quetta Gladiators and proud sponsor of the Ramazan tournament, Umar Associates, meeting everyone, meeting the secretary of Karachi Gymkhana Cricket, Mr. Jam Nafis Ali. He's been wonderful, always he's been upfront when it comes to sponsoring and promoting sports. Here we can see the visuals of the dressing, the chairman box at Karachi Gymkhana. You can see Mr. Nadeem Umar sitting next to the former president, Mr. Ali Rahim, and all other members of managing committee and senior members of Karachi Gymkhana can be seen on the screen. The role of Mr. Nadeem Umar has been instrumental when it comes to supporting and promoting the game of sports. He in fact was the sole sponsor of the Pakistan hockey team for the Champions Trophy as well. So this time single taken to mid wicket, and score takes to 119. I was mentioning the love and support of the game by Mr. Nadeem Umar. He was also the former chairman Nadeem Umar Associate. He was also the former chairman of KCC as well. And we're honored to have his presence today. So match continues, 118 for 7. We're into the 14th over. And now I would request Mr. Saim Faraz to take over the commentary box and share his views, the way he looks at the match. Former captain of the Karachi Gymkhana under-19 team. Over to Saim Faraz. Thank you very much and good evening everyone. What a beautiful view of the ground. And Aftab Avid is taking the strike, and we can see Mr. Mayunas with us today. A very proud moment for us. What a lovely day to play cricket, and the bowler comes in and he's played it for a single towards cover. What a beautiful evening it is. The score takes to 123 for IMI-OMAR. And at the end of the over, the score is 123 for the loss of 7 wickets at 14 overs. Strike rate current IMI-OMAR requires 74 runs in the next 6 overs. The required rate is about 12.33 an over. As we can see, it's a very intense situation.
Imran Idris comes in to bowl to Aftab Hamid. And, the batsman misses it. It's a wide ball. Umpire calls it for a wide. Umpire Rashid Khan. इमरान अदरीज फिर आए गेंद की और सिंगल के जानिब, थर्ड मैन की जानिब इन्होंने खूबसूरत जो है सिंगल किया. बैट्समैन आफ्ताब हमीद खूबसूरती से खेलते हुए फिल्म इंडस्ट्री की शान हुमायूनास हमारे दरमियान है आज. वी आर वेरी लकी टू हैव हिम एज आवर मेंटर. इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी आई मस्ट से. और व्हाट अ लवली इवनिंग. इमरान अदरीज आए गेंद की और इस दफा शाहनवाज ने इसको उठा के खेला है मिड विकेट की जानिब. आफ्ताब हमीद comes back to strike. और ये इमरान अदरीज है, इन्होंने गेंद की और हवा में उठा दिया इस वक्त गेंद को और 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर. दैट्स अ ह्यूज 6 रन्स. क्लास. खूबसूरत बल्लेबाजी और बिल्कुल दिमाग का इस्तेमाल किया, खूबसूरत शॉट मारी और बिल्कुल जिस तरह आप कह सकते हैं खूबसूरत T20 क्रिकेट इस वक्त हमारे सामने हो रही है. मजा आ गया. ये है आफ्ताब हमीद, ये है. फिर आए बॉलर गेंद की और आफ्ताब हमीद और पैड पे खा रहे हैं और नॉन स्ट्राइक रन उन्होंने नो कह दिया. पैड पे खा रहे हैं. ये है आफ्ताब हमीद. और इमरान अदरीस एक मरतबा फिर आए गेंद करने के लिए और ये खूबसूरत गेंद उठा दिया इसको आफ्ताब हमीद ने कवर के और ये आउट. खूबसूरत कैच लिया बाउंड्री लाइन पे, लवली कैच. और ये आफ्ताब हमीद एक खूबसूरत इनिंग्स करने के बाद आउट हो चुके हैं 17 रन पे. और जिस तरह आप देख सकते हैं मैच इज इन अ वेरी टफ सिचुएशन. और ये इस वक्त जो है आप देख सकते हैं आफ्ताब हमीद आउट हो चुके हैं. और टीवी कौन है? बड़ी अच्छी यहाँ पे T20 क्रिकेट का मुजाहरा हो रहा है. इस वक्त आप देख सकते हैं वेरी हेल्दी कंपटीशन गोइंग ऑन इन फ्रंट ऑफ अस. और न्यू बैट्समैन हुज इन, उसका नाम है आमिर हमीद. आमिर हमीद साहब आए हैं बैटिंग करने के लिए और मैच इस वक्त फंसा हुआ है. यहाँ पे 8 आउट हो चुके हैं. 14.5 ओवर के उस पे 135 रन बना के 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं IMI उमर के. रिक्वायर्ड रन रेट 12.5 है और 65 रन दरकार है 31 बॉलों पे IMI उमर को. कमेंट्री बॉक्स की तरफ से बैटिंग साइड को बेस्ट ऑफ लक. और मेरा ख्याल है कि आने वाले 2 ओवर्स में डिसाइड हो जाएगा कि मैच किस तरफ रुख करता है. और
और बैट्समैन इज ऑल रेडी, और आमिर हमीद बैट्समैन का नाम जैसे मैंने पहले बताया, और ये इमरान इदरीस आए, गेंद की खूबसूरत गेंद, और आमिर हमीद ने इसको खेला है पॉइंट की तरफ, आउट हो गए हैं, आउट, दैट्स अ विकेट, वेल बोल्ड, क्लास, खूबसूरत गेंदबाजी। और इस वक्त मैच मैं कह सकता हूं कि बैटिंग साइड के हाथ से निकलता हुआ जा रहा है, और बहुत ज़्यादा अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा जिस तरह आप कह सकते हैं इमरान इदरीस की जानिब से, लवली बॉलिंग। जिस तरह आप देख सकते हैं माशाल्लाह स्पेक्टेटर्स आए हुए हैं यहाँ पे हमारे साथ, कराची जिमखाना अंडर 19 टीम के कैप्टन समीर साजिद, यंगस्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं, बड़ा इंस्पायर हो रहे हैं, देख रहे हैं इस मोमेंट को, और एंड यही कहना चाहूँगा कि सब एक ख्वाहिश रखते हैं कि वो भी इस टूर्नामेंट का, इस बड़े कॉम्पिटिशन का आगे जाके हिस्सा बने हमारे यंगस्टर्स। और इस वक्त IMI उमर के 132 पे 9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, 15 ओवर हो चुके हैं, और 65 रन दरकार हैं 5 ओवर में। काफी टफ सिचुएशन है, एक विकेट है IMI उमर के हाथ में, और 65 रन दरकार हैं 5 ओवर। 32 IMI उमर के लिए काफी एक टफ सिचुएशन है, और नए आने वाले बैट्समैन हयात खान, और देखते हैं कि वो IMI उमर की इस नैया को पार लगा सकते हैं कि नहीं, ये हमें चंद ओवर्स में पता लग जाएगा। और मैच का 16वां ओवर करने पवेलियन एंड से आए हैं शाहनवाज। और जिस तरह आप देख सकते हैं बिल्कुल कप्तान फील्ड सेट करते हुए, इस वक्त काफ़ी एक टफ सिचुएशन है दोनों साइड्स के लिए, जिस तरह आप देख सकते हैं। सवाल ये है कि आमिर हमीद क्या IMI उमर की इस नैया को पार लगा पाएंगे, सवाल ये है। डूबती किश्ती किनारे लगाएंगे इस डूबती किश्ती को, और जिस तरह आप देख सकते हैं कि शाहनवाज पवेलियन एंड से आए गेंद की, और आमिर हमीद ने इसको थर्ड मैन की जानिब खेल दिया, खूबसूरत शॉट, क्लास, बिल्कुल कारपेट के साथ एक खूबसूरत उन्होंने ड्राइव मारी और 2 रन लिए, खूबसूरती से 2 रन किए, बढ़ता हुआ स्कोर 134। बैट्समैन आसपास देखते हुए किधर से भी वो बाउंड्री हासिल कर लें, और एक मतलब फिर आए शाहनवाज गेंद की, और आमिर हमीद इस दफा बीट हो गए हैं। एक मरतबा फिर पवेलियन एंड से बॉल करते हुए शाहनवाज, इन्होंने गेंद की, और आमिर हमीद रिवर्स स्वीप, खूबसूरत शॉट, जिस तरह देखते 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर, लवली शॉट, क्लास। सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा था, उल्टी से निकाल लिया, सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा था, तो आमिर हमीद साहब ने उल्टी उंगली से निकाल के था रिवर्स स्वीप, उन्होंने बिल्कुल अपना एज ए लेफ्टी खेला, खूबसूरत शॉट मारा। और मैं कहना चाहूँगा हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में मेरे को कंपनी कर रहे हैं हमारे स्कोरर PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के राशिद असलम, मैं एक बहुत महान हस्ती के साथ बैठा हूँ। और इस दफा राउंड द विकेट गेंद करेंगे, आए शाहनवाज गेंद की, और एक मरतबा फिर टेढ़ी उंगली से घी निकाला, खूबसूरत शॉट, आमिर हमीद का रिवर्स स्वीप, 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर, दैट्स अ 4। लेकिन बार बार टेढ़ी करने से उंगली कट भी जाती है। नहीं छोड़, नहीं बोल दो, मैं तो बोलता हूँ। और बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हुए, और जिस तरह आप देख सकते हैं कि 15.4 पे IMI उमर के 142 पे 9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, और बहुत ही बॉलर पे इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर है, आमिर हमीद जो है, और एक बार फिर आए शाहनवाज गेंद की, आमिर हमीद, और इस दफा बोल्ड, क्लीन बोल्ड, और खूबसूरत गेंद, और बिल्कुल आमिर हमीद आउट हो चुके हैं। बहुत आमिर हमीद ने खूबसूरत बैटिंग की कोशिश की, और जिस तरह आप देख सकते हैं टोटल एनर्जी जो है वो ये टूर्नामेंट जीत चुके हैं। कितने विकेटों से जीते? और क्या बताऊं मैं आपको, 54 रन से टोटल एनर्जी जो है वो ये टूर्नामेंट जीत चुका है।
मजहर हुसैन की शाहजान कप्तानी में साइम फराज। साइम फराज बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। आगे तरक्की करोगे तो इंशाल्लाह इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू वेरी मच, बहुत और शुक्रिया। अब आगे अब लेके चलते हैं थोड़ी देर बाद मैच फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए। चलें जी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी इसी अपने बन के साथ। उमर खान जो कि ये अब हम ग्राउंड पे चलते हैं। उमर खान जो कि
Low, 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 low.
आवाज चल रहा है? हेलो. Hello and welcome from the 35th Karachi Gymkhana Umar Associates Ramazan Cricket Festival 2022, where the final was played between Total Energy and IMI-OMAR, and Total Energy has convincingly won the final. So many congratulations to Total Energy. Now I would request our President Mr. Akbar Iqbal Puri to please escort our chief guest for the day, Mr. Nadeem Umar, for the presentation. We had a wonderful tournament, and Mr. Nadeem Umar, proud sponsor of the Ramazan tournament, has been escorted by the President of Karachi Gymkhana, Mr. Iqbal Puri. And we'll start off by introducing our presentation party for today. We have with us President of Karachi Gymkhana, Mr. Akbar Iqbal Puri. We have with us chief guest of the day, Mr. Nadeem Umar, owner of Quetta Gladiators and Umar Associates, our proud sponsor. I would request Mr. Jam Nafis Ali and now Mr. Ali Rahim will join us, ex-president of Karachi Gymkhana. Mr. Zahid Ansari, senior member. We've been joined by Mr. Rizwan Umar. I would request Mr. Homi Kambata, ex-president of Karachi Gymkhana, to please join us. Mr. Jan Mohammad Dadaboy, treasurer of Karachi Gymkhana. Mr. Athar Ali Khan, member managing committee. Mr. Javed Bandukra and Mr. Ali Faraz, secretary Karachi Gymkhana. So before we start off, I would request everyone to please rise for the national anthem of the Islamic Republic of Pakistan. National anthem, please. Now, I would request President of Karachi Gymkhana, Mr. Akbar Iqbal Puri, to please start off with the welcome address. Bismillahirrahmanirrahim. Aap sabko assalamu alaikum. I would start by congratulating the cricketing subcommittee for organizing such a fantastic, such a great tournament at such a short notice, because we were pressed for time, and they ended up getting all the teams together and organizing this very quickly. And as always, I would like to thank Nadeem Umar Saab, Umar Associates. He's always been a main sponsor for cricket, the Ramazan tournament for many years. I hope this relationship you continue with Karachi Gymkhana. I would like to thank all the staff for putting in the effort, and all the playing teams. You have been fantastic. You have thrilled all of us. You have played some amazing cricket. Some of the performances were outstanding.
a name crops up in my name is Ram Ravi. I mean, how do you play cricket like that? I don't understand. It's amazing. And to all the rest of the teams that took part, the winning team today, congratulations and commiserations to the winner-ups. You all played good cricket. Thank you. Thank you. Thank you so much, President of Karachi GYMKHANA, Mr. Akbar Iqbal Puri. Now I would request Mr. Nadeem Umar to please share a few words, and thank you for always being so supportive when it comes to sports. अस्सलाम वालेकुम एंड बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, पूरी साहब, अकबर भाई, आपने हमें जो ऑनर दिया। इट्स अ ग्रेट ऑनर एक्चुअली फॉर अस, नॉट फॉर यू, बट क्योंकि ये जिमखाना इज़ अ वेरी आइकॉनिक प्लेस और यहाँ पे स्पॉन्सर होना इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग। और हम वेरी प्राउड ऑफ ऑल द फ्रेंड्स वी हैव गॉट इन कराची जिमखाना, हमारे सेनेटर साहब, ये जो हमारे साथ होते हैं, द ग्राउंड स्टाफ वी हैव विद अस, ये लोग हमेशा मेहनत करते हैं और जिस तरह ये पिच बनाते हैं ओवर द ईयर्स मैं देखा है। आप लोगों को बहुत मुबारक भाई, आपका सपोर्ट स्टाफ हैज़ बीन एक्सीलेंट एज ऑलवेज, बहुत बहुत मुबारक आपको। और टोटल एनर्जी आपको बहुत मुबारक भाई, वेल डन। सारे पुराने दोस्त मैं देख रहा हूँ खेल रहे हैं इसमें, बट आज आपने हरा दिया और हमारी टीम बहुत अच्छा खेली। आई थिंक उमर प्लेड वेरी वेल और जिस तरह आमिर आपने लीड किया, वेल डन। और समी ने सुना कल तबाहियां मचा दी, बट वो आज जल्दी आउट हो गए। तो क्रिकेट है, मैं ये कह रहा था अभी अकबर भाई से, ये सारी टीमें हमारे ही हैं, कभी इधर लड़के उधर जाते हैं, कभी इधर आ जाते हैं। तो आप लोगों को बहुत मुबारक, वेल डन। और टोटल एनर्जी एज बिन अ बिग नेम, आप लोगों को वापस आना चाहिए। टोटल एनर्जी अनदर क्लब, तो वेल डन। एक बार फिर आप सब लोगों को बहुत मुबारक एंड थैंक यू सो मच। कर्नल साहब, आज आपने भी कोई विकटें शिकटें ज़्यादा नहीं ली, वरना ये टीम बिठा देते थे अक्सर। तो वेल डन ऑल ऑफ यू एंड बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Mr. Nadeem Umar, and we've also been joined by Mr. Masood Mirza, member MCC, and we have a few more words to be added. एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करना है। अभी अकबर भाई से बात हो रही थी, कैट आउट ऑफ द बैग, कह रहे हैं हमने फुल कोशिश कर रही है कि यहाँ पे हम लाइट्स लगाएंगे। तो आई थिंक ये कमिटमेंट मैंने टेलीविजन पे भी तो ये एक बहुत मजा आएगा नेक्स्ट ईयर जब आप लोग आएंगे तो इंशाल्लाह अंडर लाइट्स। और इन्होंने बहुत जबरदस्त मजा आएगा। और अच्छी बात ये ना, क्राउड को भी अलाउ कर रहे हैं कि वो आए। वो पुराना जो जिमखाना में क्राउड ही क्राउड होता था, तो वो एटमॉस्फेयर क्रिएट होता था। तो अभी मुझे बहुत खुशी हुई कि वो चीज़ जो बहुत अरसे से स्टॉल्ड हो गई, वो अकबर भाई ने बिन वेरी काइंड, इन्होंने कहा मैं करा के छोड़ूंगा इस दफा। तो वी हैव पुट यू इन स्पॉट, बट इट शुड बी लाइक दैट। थैंक यू सो मच। नहीं, thank you for pointing that out. We have had that conversation, and inshallah, if all goes well, maybe the next Ramzan tournament can be played at night during under the floodlights. तो inshallah, लेकिन नदीम भाई आपकी इसके अंदर हमें help भी चाहिए होगी, because this is a little technical. So आपके पास सारी technical expertise हैं, तो we would count on you to help us achieve our goals. Thank you. Thank you. Thank you so much, and that is big news. We have also been joined by Mr. Amin Noor Muhammad. So now I would request Mr. Akbar Iqbal Puri to please present a memento to our chief guest of the day, Mr. Nadeem Umar, Director, Umar Associates. Now I would request Mr. Jam Nafis Ali to please present a memento to Mr. Iqbal Puri, President of Karachi GYMKHANA.
The next memento is for Mr. Altaf Agha. Unfortunately, he is not with us, so I would request Mr. Atali Khan to please receive the memento on behalf of Mr. Altaf Agha from Mr. Jam Nafis Ali. Now I would request Mr. Akbar Puri to please present a memento to Mr. Ali Rahim, former president of Karachi Gymkhana. Huge round of applause. Now I would request Mr. Akbar Puri to please present a memento to Mr. Homi Kambata, the former president of Karachi Gymkhana. We've been honored to have such wonderful personalities with us. Now I would request Mr. Akbar Puri to please present next memento to Mr. Ali Faraz, Secretary of Karachi Gymkhana. Now I would request Mr. Akbar Puri to please present the next memento to Mr. Jam Nafis Ali, Honorary Secretary of Cricket, Karachi Gymkhana. Now I would request Mr. Atar Ali Khan to please present the next memento to Mr. Mohammad Hussain, the captain of Cricket, Karachi Gymkhana. Now I would request Mr. Javed Bandukra to please present the next memento to Mr. Masroor Mirza Ahmed, member Tournament Committee and member MCC. Now, as we all say, thank you, partner. Next, I would request Mr. Akbar Puri to please present the next memento to Mr. Zahid Ansari, senior member, Karachi Gymkhana. And now I would request Mr. Jam Nafis Ali to please present the next memento to Mr. Rizwan Omar. And that was the mementos. Now for the best performers of the tournament. We had some wonderful performances throughout the tournament, and it has been a wonderful tournament. A lot of impressive performances. The first award of Best Wicket Keeper, sponsored by Karachi Gymkhana and Toyota, cash award of 20,000 and trophy goes to Azhar Khan. For 6 dismissals, I would request Mr. Jan Mohammad Adaboy to please present. Also, gift hampers from Day Fresh. Mr. Azhar Khan played for Omar Associates. Very well done, brilliant performances. The next award of Best Bowler, cash award of 20,000, sponsored by Karachi Gymkhana and Park Carpets, goes to Ashar Qureshi. We've calculated till the only league matches, so 4 matches and 15 overs, he picked up 10 wickets. I would request Mr. Athar Ali Khan please to present. Ashar played for Southern Club, picked up 10 wickets. He was instrumental with the bat as well and with the ball as well. But highest wicket taker till the league stages. Well played,
Usher. He was also the emerging player of Quetta Gladiators this year. The next award of Best Batsman, cash award of 20,000, sponsored by Karachi Gymkhana. There is no doubt in this one. I request Mr. Homi Kambata to please present the award to, you have to tell me the name. Ram Ravi, that's right. 500 runs overall in league stages. He scored 3 centuries. League stages 3 and overall 4, 500 runs in the tournament. First person. And Ram, you have to stay because you have an extra award, special award of rupees 5,000 presented by Mr. Homi Gadial. If you can please come forward. Wonderful performance. First person in history of Karachi Gymkhana Ramazan tournament scores so many centuries. Now the Best Fielder Award, sponsored by Karachi Gymkhana, cash award of 20,000 and trophy. I would request Mr. Ali Rahim to please present the award to Tanveer Ahmed of IMI-OMAR. 6 catches and few more in the knockouts as well. And now the next one, the big one, the man of the match of today. That is cash award of 20,000, sponsored by Park Carpets. I would request Mr. Nadeem Umar to please present the award to Saeed bin Nasir. 81 not out of 54 deliveries, 6 and 10 fours. He walked in when it was 0 for 1 and he walked out when 168 runs were on the board. Man of the match award, cash award of 20,000 and gift hampers from Dayfresh, Angeti, Candyland, Al Zuhaib and Levis Store. Now the next award of man of the tournament, cash award of 20,000, 25,000 plus trophy, sponsored by Karachi Gymkhana. I request Mr. Akbar Puri to please present the award to Ram Ravi. 500 runs in the tournament. And special award of 25,000 in addition for Ram Ravi from Mr. Nadeem Umar. So he bags in another 25k. We should know the route from where he's going back home. I would request Mr. Akbar Puri to please present another memento to Mr. Javed Bandukra for being our guest of honor for today. Thank you so much for joining us. And now the runner-up for today, cash award of 200,000, sponsored by Karachi Gymkhana. I would invite the captain of IMI-OMAR to please come forward and receive the award from Mr. Nadeem Umar. Captain of IMI-OMAR, runner-up. Cash award of 200,000, sponsored by Karachi Gymkhana and Umar Associates. And now for the winner, cash award of 400,000, sponsored by Karachi Gymkhana, Umar Associates. And that goes to, of course, the winning captain of Total Energy. I would request Mr. Akbar Puri to please present the trophy and cash award, sponsored by Karachi Gymkhana and Umar Associates. What a journey, what a journey. They made it to the finals by only 1 ball difference in the knockout stages. And I would request
I would request Mr. Mazhar to please have a few words, quick words. First of all, many congratulations. आप टूर्नामेंट जीत गए एक ऐसी पोजीशन से जहां रास्ता बाहर की तरफ जा रहा था. बिल्कुल ऐसा ही है और इस पूरे टूर्नामेंट में हमें पूरा टूर्नामेंट हमने बहुत इन्जॉय किया और ख़ास तौर पे ये फाइनल हमने वाकई बहुत इन्जॉय किया. IMI इज़ अ वेरी गुड टीम. ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमने IMI को हराया, लेकिन इट्स अ गेम, कोई भी जीत सकता है. लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रही IMI की वो बहुत अच्छी थी पूरे टूर्नामेंट में. हमारी भी पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस टीम की बहुत अच्छी रही है और हम सारे गैर मारूफ लोगों के साथ खेलें. लेकिन थैंक यू वेरी मच माई टीम टू प्ले द वे यू डिड. थैंक यू वेरी मच. मैं एक और भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिमखाना का और इसके अलावा जिमखाना के तमाम जो अहदेदारान हैं, स्पेशली जाम भाई, हमारे मोहम्मद हुसैन और नदीमा. आपका तो नाम लिए बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती बात. थैंक यू वेरी मच. और मैं चाहूँगा एज ए गुड गेस्टर 10% ऑफ द विनिंग मनी आई गिव इट टू द स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ. Thank you so much. And now Mr. Mohammad Hussain will have a few words. Please join us for iftar in KG Hall. Iftar is ready. KG Hall, KG 1 and 2. Hall 1 and 2. Please, time is short. That's all from the presentation. Thank you so much to the presentation party for joining us. Congratulations to Total Energy for winning the tournament and very well played IMI-OMAR. And that's all from today. Please join us for the iftar in KG Hall 1. And